आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें पहले। मैं इंट्रोड्यूस अपने आप को करूँ? Oh gosh, I don't know, I wear so many hats. छोटा सा वाला। छोटा सा एलिवेटर पिच चाहिए। I don't know, it's difficult, Saad, right? Because I'm involved in many things, but I think जो मेरा जो purpose direction here is about doing good. So everything I'm involved in, whether that be coffee, sustainability, or SDGB, is all inherently around doing good. कि उसका फ़ायदा होना चाहिए, not just society but सबको. So stakeholders in a whole ecosystem. Obviously, I'm not from Pakistan. I've grown up abroad, but Pakistan से ऐसा कोई connection है. वो कहते हैं ना पानी में कुछ है. So there's that. So my heart is here. But you live in London. Yeah, I live in London. I did live in Karachi for a number of years and Islamabad when I used to work for the UN. फिर posting हो गई and then we just ended up back in London and that's home. So, but ये भी घर है. Family तो यही है ना? नहीं, family is over there. है? Yeah. बच्चे सब उस्मा बच्चे सब वहीं पर. No, but like parents or khala. Yeah, mum and dad are there because I was born in the UK, right? So mum and dad are in the UK. My brother, my sister, bhabhi सब वहीं पर है. ननियाल ददियाल यहाँ पर है. Extended family sir. Yeah. But I feel I'm just in between the two, so both are home, if that makes sense. Right. Okay. बस उसको पंखे का होगा ना? खजर वो पंखा बंद कर सकते हैं? बहुत ज़ोर से चीख रहा है. So I don't know, entrepreneur I think is not quite the word because I'm in that space, but I'm also in sustainability from I don't know, I think I'm just a citizen of this world who wants to do things the right way, do business the right way, keep relationships the right way, and I guess sabka fayda ho jata hai, then why not? Awesome. So I don't think that fits into a category. Too many things. Yeah. So the thing I want to talk to you about today was, of course, SDGs, what they are, because a lot of people still don't know about them. Yeah. But also, जो आपका, I think UNGP जो compliance में help करती है, and why is it important, and what are the benefits actually, अगर हम numbers में benefits भी बता सकें लोगों को, कि compliance का साथ क्या क्या benefits आते हैं, like it either gets them more money or gets them something, which it does. Yeah. I mean, carbon credits वाला भी तो एक business है पूरा. Yeah. So there's always a net kind of benefit down to transactional value. So I think, let me start off by saying, so this word sustainability is very specific, but it's also very broad. So there's a contradiction in itself. I look at it as the world's biggest to-do list. कितनी लंबी लिस्ट है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और इसमें क्या है लिस्ट के अंदर? गरीबी हटानी है, एजुकेशन सबको देना है, क्लाइमेट पे भी कुछ करना है. I mean, it's like everything you can think of, all of the problems of the world. But there are also the solutions behind it as well. So it's not just कि ये लो, oh my gosh, क्या होगा? So they've been depicted into 17 specific priority areas, and we call those the global goals. So there's 17, 1 to 17. And उसके पीछे impact areas है. So for example, जैसे अगर हम human rights के बारे में बात करते हैं, so human rights is हमें packaging भी देखना है ना. There's a little bit of marketing and packaging and perception around sustainability and the development goals. So if I say to you, यार साथ human rights पे कुछ काम करना है, you say, yeah, that's boring. I know it should, but it's boring. So it fits into peace and justice, which is goal 16. Because that sounds more appealing, right? I can get involved in peace, I can get involved in justice. So there are indicators that we put behind it, so 16.1, 16.2, 16.3. But the way the Sustainable Development Goals have been developed, and myself and a couple of other people were part of the working group that helped put that together back in 2000, is that it's a framework. So don't feel like you say लोग सोच रहे कि वो किस तरह इसमें आए, क्या करना है, compliance, and I'll come to that in a moment. It is the biggest to-do list of the world. It's a framework, and if it's treated as a framework, it means that you've got some direction of travel of what needs to be done. How it's done is up to you,
But you also have the value or the benefit behind it because you know the impact indicators. So for example, even though we're talking about it today, I'm actually kuch karne, but we're raising advocacy. I see. So that has an impact on reducing inequalities, which is goal number 10. Because now we're going to make people aware that every person has a right, and they have a right to education, they have a right to services, etc. So I think I've probably taken this on as a personal mission. I got involved in the SDGs many years ago. I've made it my life. I do other things as well, as you know. Actually, I don't know about a bunch of them. Okay, so there's other things as well. But because I've really understood the true nature, essence of sustainability, and I align it with Islamic values as well. So fundamentally, अगर अब हटा दे global goals को, कहते Islamic हमारे values के, whatever your journey on Islam is, be good to people, do business the right way, do this, is all the things that we should and could be doing. Then I look at the SDGs and I think the way cheese get it's just packaged differently. So for me, it gives me my North Star, my moral compass, and then everything that I've been involved in ever since, I always look at, इसका कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, इसमें फ़ायदा और लोगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें ये चीज़ सही तरीके से हो रहा है, so am I doing business the right way, is my temperament right, am I looking after my employees, my colleagues, my stakeholders, am I even thinking few steps further ahead and thinking what's the value add that I'm giving myself as an employer or as a business person, but also as a citizen and a provider of a service or a product long term after I'm gone as well. And the SDGs framework allows me to sit and analyze that very simply. So, whether I'm doing the UN stuff and advocacy, or whether I've do my coffee, organic fair trade, to apni jagah, but is my product repurposable? Not just recyclable, but can it be reused again and again? I know there are challenges with recycling in this country. So can my product be biodegradable and compostable? And yes, it can. Can I? आपको आवाज़ आ रही है? स्पीकर लगा लें? I think I look. या आगे आ जाए. कुर्सी पकड़ के आगे. आपको आ रही है? स्पीकर लगा लें. लगा लें. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? So I think if we look at Sustainable Development Goals as an opportunity, Sorry. that's okay. So if we look at sustainability or the Sustainable Development Goals as an opportunity, as our friend, the framework's there, the directions there, the goals identify the areas that we also need to look at. So already किसी ने मेहनत कर लिया बताने की ये problems क्या है, साथ में बता दिया है कि इसके पीछे क्या impact है. So if you educate someone, you're not just giving them literacy education, you're actually empowering them to uplift themselves in community. So that's not just get out of poverty and get a job, it's also be employable but contribute back to society. तो आप citizenship पे काम कर रहे हैं. So I think I love the SDGs because it's a way of life, and I think what we do need to do is really ramp up what we're doing. As you heard when you came to the event a few days ago, now we're at the halfway point. The UN indicated many years ago that 2030 तक हमने ये सारे काम कर लेने. If we don't, then the world will be in a bad state. So I don't want to put negative on it, but I'm worried about that. And there is a lot of negative to it, and you should be worried. Yeah, so I embrace that. I don't think, oh my gosh, kaise hoga, raat ko hum so nahi sakte. And I do have those nights as well because I am worried, genuinely. But I also then think, I know what the direction of travel is. To main aur kya kar sakta hu? And the thing that I do best is bring people together. So I'm not an engineer. I don't know how to solve the world's problems, in education or how to solve food poverty. But I do know how to bring people together. So if I can bring you onto this journey and help you understand that you have a role to play without pointing the finger and saying, "Sat tumne kyun nahi kiya?" Say, "Sat kuch kar sakte hain." I know you're doing the plant tree campaign as well, right? You're having such a big effect and impact on climate, but also our environment in terms of how we live.
So net benefit from that is not just better climate, it's better quality of life. And you help reduce inequalities that way. And then all the ecosystem as well. So I think for me sustainability just is absolutely amazing. I wish I'd come across it earlier. And I think there's a lot of work to do, but your generation and our generation need to do a little bit more. I think you guys are clued in better. You made us learn it since we've been tiny. So, I don't know if we've taught you anything, but you clearly know the direction of travel. Thank you. So, Pakistan mein, again, so you have told us कि होते क्या हैं, क्यों बने, किस तरह बने. What would be your, again, मैं pitches पे थोड़ा focus करूँगा, लेकिन what would be a 30-second pitch to the masses in Pakistan in Urdu कि वो इसके बारे में एटलीस्ट अवेयर तो हो जाएं कि है क्या और क्यों हम उस पर फोकस कर रहे हैं. Oh gosh, 30 seconds is not going to be enough for sustain, but sustainability should be a way of life. और उस पर फ़ायदा क्या है मास्टर्स का कि अगर हम सब चीज़ें कर लेते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं, we'd have a better quality of life and we'd have a sense of unity, faith and discipline. I firmly believe that, and I think Kate got it right pre-17 goals. So I think my pitch really would be that if you can adopt the framework of the SDGs in your everyday way of life, whether you're a corporate or an individual, जिस हम इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ से देख लें. If you look after your environment and your stakeholders, आपका net फ़ायदा है. I don't have to tell you what those benefits are. It's there in front of you. So I see it as an opportunity, and I think everyone should, try and attain or adopt some direction of sustainability or the SDGs. Awesome. And okay, so we've got that clear up. पाकिस्तानी लोग इसको कैसे embrace करना शुरू करें, and then what are the monetary values they can actually get out of it? So I think all of the problems that we see in the world are also in Pakistan, probably tenfold, but I really firmly believe so are the solutions. Our people here are resilient, they're pragmatic. आप लोग क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में तेज? क्या है तेज हैं? I don't know if that's the right. मैं तो कहूँगा थोड़े चालू भी हैं थोड़े से, उसकी वजह से जल्दी काम कर रहे हैं. So when we were growing up, there was this word that I heard, जुगाड़. जुगाड़. But it was a bad word, right? It's like कि काम आता नहीं है, बस तक करके कुछ कर दिया और वो 2 दिन में टूट जाएगा. I find it as the quick fixer. But now that's a positive word. So I mean it's a hack, right? So I think in Pakistan बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो just कहते हैं यार हमें पता है इसको किस तरह फिक्स करना है, हम कर लेते हैं, हम इंतज़ार नहीं करेंगे. So if I go back to your point, I think Pakistanis here are absolutely amazing, and Pakistanis abroad as well. And I think you have the solution to all of the problems of the SDGs right here in Pakistan, and हम ही fix करेंगे. And the world spotlight is on us now. So जब हम UN conventions में भी जाते हैं या मैं अपने sustainability के हवाले से काम करता हूँ, तो मुझसे वही पूछा जाता है पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में क्या है. Everyone wants to know what's going on in Pakistan. और जैसे पहले बात की पानी में कुछ है. And I think we run a campaign called the Road to 2030 via Pakistan because we firmly believe that most of the solutions, if not all, for the SDGs will come out of Pakistan, whether that's tech-driven, agri-driven, or just through the natural disasters that we're seeing. हम उसका कुछ solution निकल जाएगा वहीं से. So I'm really optimistic about Pakistan, and as we should be. And 70 years तो चल ही रहा है ना. हाँ, ठीक है, 70 साल से चल ही रहा है, कोई ना ऊपर वाला चला रहा है, आगे भी चलाता जाएगा, अल्लाह करे थोड़ा बेहतर. But it's the will of the people as well, जो भी issues out there, we just get through it, right? But today in this world we have such mediums available because of this thing. Okay, change is so fast, and then we just need good content getting out there which actually educates more people, because if there's 10 people innovating only in this country, it's not enough. We need thousands, tens of thousands of people to just be more positive and try to fix things. Well, that's one thing I've seen in the years that I've lived in Pakistan and been in and out of Pakistan. This spirit, I wouldn't necessarily call it entrepreneurial spirit, but this spirit of करना है कुछ या solution निकालना है, whatever the temperament behind it is there, and
that's where I see acceleration happening. So, you know, just give you an example. I met your dad many years ago, and तब हम बात कर रहे थे कि हमको जिस तरह का बैठ के कुछ conversation करने, was like, हो सकता है. We're like, कैसे होगा? Because our school of thought was, you have to be on a TV show to have a conversation like this, right? And you have to have a journalist background or a media background. और अब देखो हम यहाँ बैठे हुए casual बात कर रहे हैं, unscripted. And that's raising awareness, right? And I think it's important. And the responsibility on people like me is also that I need to share my insights, right? I'm not claiming that I'm an expert or that I have all of the answers. But if a conversation karenge to kuch hum dono seekhenge, and I've already been learning a lot today, you know, with your audience and yourself as well. Awesome. And आपने expert वाली बात करी. I don't think anyone needs to be an expert anymore. We just need execution, because expert अब तो ChatGPT आ गया. Yeah, I think in our generation, when we were growing, when we were your age, we had to be an expert, a champion of something. And that definition of expert was very different. कि आप अपना काम एक पकड़ ले, आप engineer है, पकड़ ले उसको बस, you know, I used to be a lawyer, so it was be the best lawyer, and that's all you do, and you can't do anything else. But I think in today's society, with technology like say ChatGPT and other AI functions, and just access to information, I think we're in a position, we're very lucky, but we also have to be responsible, where we can connect with people literally anywhere at any time, and we have that responsibility to make sure it's relevant information and right information. So that goes back to doing business the right way as well. Yes. बहुत सारी चीज़ें हम बात कर लेते, but I shouldn't overstep my mark as well. But I think, just on your point of being an expert, I think you need to know enough about everything so you can be part of the conversation. I think you need to know enough to ask the right questions. Yeah, and be part of the conversation, because if you're not, then you're excluded, right? So I don't know enough about technology and AI, although I'm in the tech business as well. But I surround myself around people that do, and I constantly learn. So I don't claim to know everything. You know, even coming here today, in my mind, मुझे साथ से क्या सीखना? So then I know that I'm contributing, but I'm also getting some value, and I'll go away more enlightened and uplifted and think, अच्छा ठीक है, at least मैंने कुछ contribute तो किया, but मैंने भी कुछ सीखा, and I need to pass that on as well. That philosophy of life, of, you know, full circle. Awesome. What can we do to start? What can we start with? Making Well, we can make voice, we can do all of that, but on an individual level, for the masses, what can we do to start? Yes, with industries, you had one of the top companies, industries already on board. You already have them on board. Yeah. Magar, our cottage industries, our smaller industries actually make up the masses in Pakistan. Yeah. Well, that's one of the reasons why we set up SDG.me, which is our tech platform on sustainability. We can talk about that another time. But it was really to level the playing field. And I feel that, so I used to work in big corporate, used to work in government, UN, Wasari, you know the background. I always used to play at this level. It was hard work. And then when I became an entrepreneur, I was like, मैं तो अकेला हूँ. And I do feel lonely sometimes. I have a business partner, but being an entrepreneur is lonely. And those who are entrepreneurs know what that feels like. So I think for me, going back to sustainability and the framework was always like, how can I do good through my business? And I thought, I need to do something for, not the chote log, that's the wrong way of putting it, but The masses. for everyone, right? Something that everyone can get value from. And how can we fight the big boys? And I don't mean fight as in a proper, court battles and stuff, but just, they always get the limelight. And if you look at a corporate, it's got its direction and its ethos and vision and values, but it's made up of people. So if you start unpicking or unpacking everything comes down to people and human rights. So for me, it became very much about, when we talk about masses, how can I uplift society, or how can I uplift one person and they can uplift another and they can uplift another. So I don't know how to do that. I can have lots of conversations, but I could be doing this and ghar kis tarah chalaunga phir. So when we're looking back at SDG.me, we thought, how can we create a product that's available to anyone and everyone, accessible to everyone and anyone, and is affordable to anyone and everyone. And we have some small companies, there's a chai wala, and when you look at his, मैं बता नहीं सकता हूँ नाम. चाय वाला दुकान जो है? No, I won't say, but he's just a chai wala.
not just a chai wala, I mean, he's a chai wala. Okay. And there are smaller businesses, like you talked about, cottage industries. So some of these companies or these setups have taken the SDG assessment and they've got their scores against wo kya kar rahe sare global goals ke upar, because it's done with the indicators at the back. And when I look at some of the scores, so I look at this Chaiwala score of what they're doing on no poverty, it's 79%. And I look at a multinational score, it's 63%. So now when we talk about leveling up, changing the norms and rebalancing power, which was our theme this year, there's like, wo kya kar raha hai? Now the big corporate can learn from the small company. And most corporates have policies in place, whether they do it in practice or not, and mostly they do, but the policy is there. And most assessments globally have, and we talk about compliance, have been, aapke paas policy hai ki nahi, aapke paas policy hai. Now Chotu is not going to have a policy, a cottage industry. Chotu chai wala hai? No, any Chotu. And I mean that affectionately. And any small cottage industry business is not going to have policies, because wo kahan se, I mean, do they have the mindset of a policy? Do they need it if they're just two people? Where they're going to get it? Who's going to sign it off? Then, you know, is it signed off by, you know, senior person, all that kind of stuff. So, but basically, yahi hai ki I think leveling the playing field is important. And when we talk about the masses, they should have the same access to the things that everyone else has at the high level. That's when we see real change. But I don't see that happening straight away. I think it'll take time, because there's resistance, right? Yeah. There's resistance from the masses, because they don't want change. वो अपनी चीज़ों में फंसे हुए हैं. And then elites, if you can call them that. Okay, so there is resistance, but so we have our Pakistan has been running for the past 70 years on a, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक कोई टर्म होती है ना, लेकिन मतलब आज नहीं किया तो मतलब कल का सोचना है, अगले 2 साल का सोच ही नहीं सकते ना. So we're living in now only. Yeah. We're not planning for anything. Same thing goes with our masses, same thing goes with our businesses, same thing goes with everyone. And उसकी वजह से ना इनोवेट करते हैं, ना कुछ आगे का प्लान कर सकते हैं, और सब एक्चुअली इमरजेंसी सिचुएशन में रह रहे हैं. सबके पास, किसी के पास पैसे ही नहीं है रहने के लिए, जीने के लिए. तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि should we just forget about the goals and start focusing on making money? And how can, what's the middle way? So I'll unpick that slightly and throw a question back to you. Who said that's the wrong way? What's the wrong way? कि बस आज का सोचना, live for the moment. नहीं, I'm not saying that's the wrong way. When we do think like that, we're like, okay, अभी अगले 2 साल के लिए कोयले का प्लांट लगा लो, क्योंकि उसके बाद देखेंगे सोलर का. सिमिलरली आज पाकिस्तान में गैस को सब्सिडाइज किया जाता है, नेचुरल गैस को, लेकिन सोलर पैनल सब्सिडाइज नहीं होके देते, या उसके ऊपर लोन्स नहीं मिलते सही से. सिमिलरली पेट्रोलियम पे सब्सिडाइज करके लोग गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सब कोई पॉलिसी नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि हमारी जो पॉलिसीज है वो आज का सोचती हैं. हम कहते हैं अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल आने में 2 साल लग जाएंगे, नहीं, उसके बारे में सोचो. And I think the response or the reason behind that is investment. So I used to be a policy advisor in the UK government many years ago, and हम आगे का सोचते थे. So 2005 I was in government and I developed policies for long-term pensions and child trust fund, जो 18-20 साल के बाद का benefit का सोच रहे थे. So there was stuff that had to be done initially, but it was the next generation or the later generation should benefit. I think Western economies, generally, and I'm generalizing here, have the privilege or the benefit of being able to do that because they've got different structure. Industrial revolution was very different. We can go into history and all that. When we look at countries like Pakistan, you're thriving at a different level. Everything is different. It's not apples to apples. आपके opportunities different है, आपके worries different है. Okay, we talk about global goals, you know, the world's problems are the same everywhere you go. The way of doing business here is different. Government is different here. Government is influenced differently here as well. So we've got to be mindful of that as well. And I think solution as such तो मुझे नहीं लगता है, but I try to see the value of the now as well as the long term. So I'm a long term planner, always have been. I mean, the coffee की अगर हम बात करते हैं, मुझे
almost 18 years लगे वो business set up करने के लिए, because I overthought it, analyze, business plan होने चाहिए, उसको fine tune करना है, फिर ये करना है, वो करना है, ये करना है, जब ये होगा तब मैं करूँगा, because that's how I had been brought up and that was my training and my education and that was the British way of doing things, not necessarily the right way or the wrong way, but that was a way. When we talk about Pakistan or countries like Pakistan, don't do a comparison. I think you've got to look at, if we're living in the 2-year window, what can we learn whilst we're doing that? So when we get to the 3-year window or the 3rd year, and I'm switch kar rahe, are there any value additions and contributions and positive outcomes from that? Or was it done with the wrong intention in the first place? So you get where I'm coming from? I think what you were saying is here, हम एक काम पकड़ा, आज हमने पानी का काम पकड़ा, चल पड़ा, पैसे बनाए, फिर कुछ और पे आ गया. You could call that entrepreneurialism. But are you leaving value behind? And I think if you're leaving value behind, then that's okay to do that. If you're not, if you're just take, and it's one, then that's no. But there's also this public-private partnership mechanism where government, private sector, and masses need to align. And I don't see that happening in the foreseeable future. And honestly, it's safe to say that whenever we plan something or we even doing something, we don't think about the government anymore. And I don't think अभी इस situation में देखना भी चाहिए क्योंकि government is kind of irrelevant for businesses. Yeah. It's relevant when they come to your office and they're asking for something, but it's irrelevant if you're thinking about policies or how you're going to grow. Yeah. And what kind of impact you're going to have. तो privately इसीलिए यहाँ पे हर एक thrive कर रहा है, इसलिए इतनी NGOs हैं सब हैं, और and you know more than me. Yeah, no, I used to be a lobbyist. You know, वही history में भी जा रहे हैं, you know, so when I was in investment banking, I used to lobby government. हर जगह होता है और ज़रूरी है. Government doesn't get business and business doesn't get government, right? But one thing I will say in government's favour, not this government, just any government anywhere in the world, is that you've got to think of them as a CEO of a company, and they have the responsibility of all of the population and all its infrastructure. तो अगर CEO company का है, उसके employees हैं और उनके घर वाले, and the business or the service they provide. When you look at a government, and if you do an apples to apples, they've got so many products and services. They've got to give welfare, they've got to give healthcare, they've got to give education, roads, infrastructure, safety, security, investment opportunities, absolutely everything. And they're not necessarily the experts, right? And then they're only there for a certain amount of time. So I don't look at government and think, tum ye nahi kar. I think, oh my gosh, that's a daunting task. I'm so glad I'm not in your position. But I want to help as well. And I think lobbying helps. And I think engagement helps. But it's... तो कार्बन क्रेडिट ये होते हैं कि कुछ कंट्रीज़ ने एक लिमिट बनाई है कि आप इतना कार्बन एमिशन से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते. अगर इससे ज़्यादा करेंगे, हाँ, नहीं, अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा बाय डूइंग समथिंग एल्स व्हिच ब्रिंग्स यू न्यूट्रल. कि जी आप इतना एमिशन एक कंपनी इस प्रोडक्ट के लिए इतना एमिशन नहीं प्रोड्यूस कर सकती, उससे ज़्यादा करेगी. अगर जैसे ऑयल कंपनीज करती हैं तो वो एमिशन जो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है उससे ख़रीद लेंगे वो क्रेडिट्स. ऐसा ही है ना? Yeah, so for example, whatever car you drive, if I may, if you drive a big car, 5 litre, and it's producing 6 tons of emissions, and your allowance per year is 3, तो आप over हो गए ना, तो आपको penalty लगनी चाहिए. But let's say I've got a smaller car and mine produces 1, so I've got my allowance of 2 left over. So in theory हम trade कर रहे हैं, तो मैं कह रहा भाईजान को दे दो मेरा, तो उसका penalty 1 पे आए, not all of the. तो अब directly तो मुझसे नहीं कर सकते ना. तो there's a marketplace where I can sell my surplus and you can buy it. So उसको carbon credits कहते हैं. बहुत मज़े की चीज़ है. But it's unregulated. नहीं, so it's not on the car, it's on the global. It's on the global one. तो जैसे BP है, Shell है, ये लोग कार्बन क्रेडिट्स खरीद रहे होते हैं क्योंकि they're producing more than they actually are. So it's an unregulated market. It was created by these big players. Again, I'm going to play, you know. हाँ. कि ये conspiracy theory शायद है
because वो इतना नुकसान दे रहे हैं environment को, तो जितना भी उसको ठीक trees plant कर ले is never going to be enough, so they come up with this carbon credit and say ठीक है तो हम खरीद लेंगे ना, we'll buy the goodness, कोई और फिर उस पे कर लेगा. So carbon credits are like a token transaction, भी उसकी value है. नहीं, इसको ऐसे मैं ज़्यादा सवाब कमाता हूँ, आप गुनाह कर रहे हैं, तो आपको न्यूट्रल होने के लिए मेरे सवाब थोड़ा सा खरीद लो. हाँ वही है, ऐसा ही है. So carbon credits are traded, and they can buy, you know, so then there's organizations that will plant trees for you and stuff like that. So तो अब कंपनी ये कर रही है कि कहती है ओके मैं दरख्त लगाता हूँ, मैं दरख्त का बिज़नेस कर रहा हूँ, मगर इतने टाइम के लिए क्योंकि दरख्त मैं लगा रहा हूँ और मैं दुनिया को इतना फ़ायदा दे रहा हूँ, तो मुझे जो मैं ये कार्बन क्रेडिट्स में प्लस पॉइंट में हूँ, आई जस्ट ट्रेड इट ऑफ विद यू विद ऑयल कंपनीज फॉर एग्जांपल. And oil companies, I think, one of the largest buyers. Yeah. And lots of people are moving into that space now as well. हम भी उसी को देख रहे हैं. My business partner Firoz Bhai is leading that Saudi Arabia के अंदर. Really? Yeah. So I mean, again, marketplaces again another opportunity for the tech businesses, but people who have investment and want to go in traditional businesses, I'm not pointing fingers, but this is a very good opportunity in the long term. एंड कार्बन क्रेडिट्स वाली, क्योंकि आप दरख्त भी लगा रहे हैं, दरख्त इवेंचुअली देखा जाए तो एक इंडस्ट्री है जिसमें आप 10,000 लगाते हैं, हर साल आप हज़ार काटते रहें, वो आपसे उगते भी रहते हैं. I think it's important to have more people in this space, the marketplace के अंदर. Very much. Good for environment as well. हाँ. Yeah, I mean, if you look at the environment is the only beneficiary if you look at that, because the only way of doing the carbon credit offset is by planting trees or doing something nature related. We have to think a little bit further and harder, but jo dikta bikta, right? So it's tangible. So if an oil and gas company says humne carbon, so they're repackaging everything as well. We talked earlier about how you repackage stuff, you know, brands and stuff. So I don't think we got a clarity on that. So if you can just explain that. So छोटू चाय वाला, sorry, चाय वाले ने ये किया कि इट्स नाउ शोइंग कि ओके मैं ऑयल कंपनी से इतना अच्छा हूँ, उसने वो वाज़े करना शुरू कर दिया. तो अमेरिका में या यूरोप में जाएं तो पैकेजिंग के पीछे लिखा होता है कि ओके दिस इज आई एम दिस इको फ्रेंडली और व्हाट्स दैट. सो आपने, आई डोंट वांट टू यूज दिस ब्रांड बट इट सेज दैट we won't name the company, but it says on here that are they sponsors? No. But you can. It says that they I don't know, the bottle might be recycled or something, right? Yeah. So why are they saying that? Because I want to let you know वो awareness की बात है, and the platforms that they have, so not just on social media but on tangibly, कि आपको feel good हो कि मैंने शायद अच्छी चीज़ खरीद ली, जज़ाकल्लाह, या फिर मैंने बुरी चीज़ नहीं खरीदी. Like, just imagine if that bottle of water or that packet of biscuit that you've got said 25 kids lost their teeth as a result of eating this biscuit, would you buy it? You wouldn't, right? You feel bad. So everything is about making you feel good. So we're talking about packaging. It works globally, and Europeans and economies have been doing it for ages. So using things like this chocolate is fair trade, it's organic. So उसके पीछे basically ये कहा जा रहा है fair trade के ऊपर के जो plantation पे जिसने कोको पिक किया, हमने उसको सही wage दी. In my mind, I don't think that's good enough. Why is he just being paid the minimum wage anyway? He should be paid more, right? Because we काम कर रहा है. But that's how capitalism works. So there's a whole ecosystem, right? Someone is paid something, someone makes some profit from that, and someone from that, someone from that. So products are now looking at putting, brands are now looking at putting labels and icons on the back of their products to engage you more, make you feel better. So हर चीज़ के ऊपर देखो Facebook का या Instagram का logo लगा होता है, so that you can click on it and you can see, oh, these are good companies doing this great stuff. So we've started doing that with SDG Me. We're in talks with 2 big companies in Pakistan. SDG Me? SDG Me जो हमारा tech platform है, the Sustainability assessment. So if you've taken the assessment, and I'm using Chai Wala again, or if it's a multinational. No, I'm not saying anything. And they've got good scores and they're proud of it. So I'll give another one. So मेरी अपनी coffee की company है, Alchemy. I'm proud of how we've started our organization, and everything was built around the SDGs. कि हमने business किस तरीके से करना है, हमने product कैसे खरीदना है, कैसे, and it's taken a long time and it's more investment, but I believe the return is there.
on the back of our coffee के जो pouches है वो हमने भी हमारी कहानी है कि हमने इस तरह शुरू किया था obsession था you know the usual kind of stuff that you have to engage but there's a QR code at the bottom and it's got SDG ka logo because we've taken the assessment and I'm proud of our scores so I want someone to scan that barcode go onto the website and say अच्छा Zubair की coffee की business ये कर रहे हैं sustainability में oh I feel good I want to buy his product same goes I have Nespresso compatible pods I'm not doing product placement now they're biodegradable and compostable तो जब कोई आता है तो अच्छा ये आपके Nespresso pods हैं हाँ बिल्कुल and I don't even go into what the quality of the products because I know it's up there I'm saying biodegradable है तो आपने इसको बाहर कचरे में फेंक दिया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं and they sell because of that reason alone so people connect with goods and I think going back to how do we connect with masses अगर हम सबको ये framework के अंदर we don't have to say SDGs say हम मिलके करें हम अपने तरफ देखें कि how can we be nice to the person next to us or if we're in a business how can we do business the right way how can we look at products and services how can we do better improve and I think all the solutions are there and I think that will help us work together and if we work together as communities we're delivering on the goals because that's one of them if we work together as businesses and entrepreneurs we're going to share ideas and exchange we're going to improve we're going to be smarter we're going to be part of a bigger ecosystem and like just तुमने भी मुझे पहले कहा था you're going to set up a cafe and said कुछ मिलके करते right उसमें फ़ायदा नुकसान की अलग बात है but it's about your North Star seems to be similar to my North Star you want to do something great for this country you want to do great with other people and you want to involve people on the journey so we're already aligned so I think it's about we look at masses I think we've got to look at them as champions and you know just back to your earlier point when I look at everyday people I see everyday heroes I see कोई ना कोई कुछ अपने घर के अंदर champion कर रहा है so I would like to see you भाईजान as being a role model to your brother here I'm a role model I hope to you and you're a role model to so many other people and I think अगर हम उसको ज़हनी तौर पे रखें कि हम role model है we'll be conscious of what we're doing when we're doing work and business so Johari's window someone gets a chance to Google it rather than be unconscious conscious कि हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं हम उसका excuse किया हमें तो नहीं पता था I think we all have a responsibility and if we're role models then I think we can move forward better quicker smarter businesses will pick up and then just back on your point on the assessment and chai wala or coffee wala or Allah wala yeah now you can go to impact investors and say do you know what my business is actually green Yeah, so impact investors. I forgot to talk yeah about so that. I'm doing a series fundraise right now for Alchemy right so I want to open up a handful of flagship stores Lahore, Karachi, Islamabad on a franchise out I actually want to talk about that. Yes. so I'm thinking if I go to investors what differentiates me from everybody else and they're going to ask me तुम्हारी coffee में क्या है तो मैं बोलूँगा मेरी coffee ये वो ऐसा ऐसे हाँ वो तो उसकी coffee भी someone can come and replicate I say inherently my business is about doing good I have adopted the sustainability framework everything I do has an impact 85% of our team are women all of our suppliers are social entrepreneurs so I only work with startups it's tough because they don't always have the scale to deliver we've signed up to all of the UN principles that you can think of I do business the right way I pay in advance I don't pay after so if I've got a supplier मैं 2 दिन पहले payment करा because I think that's the right way to do it now that has a net effect on my cash flow and then also the product and the packaging and all that kind of stuff so when I go to an investor and I'm saying all that I say but where's your proof now I say I have an assessment that I've done obviously there's bias because it's not independent but I declare that I'm saying कि मेरा assessment UN से related है because we're partnered with UN on this assessment and it's telling you the scores and my ESG scores now he's interested or she's interested because उनके लिए भी एक story है ना वो भी आगे जाके कैसे I've invested in an green business coffee blah 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 Pakistan going to change the whole coffee scene and then when they go for investment from their companies or other people they're saying the same thing so all I'm doing is expanding the ecosystem and if we go for smaller businesses we're leveling up wali baat take the assessment with you and go to an impact investor and say now it's the other way I need your money
but are you the right kind of investor for my business? Now that conversation is a very different conversation, and that's the conversation I'm having. So I've already met with a couple of investors this week, and alhamdulillah, amazing response. And I'm just thinking, are they the investors I want to partner with? They're great people, so I'm not criticizing them, their personalities or what they do great work. But it's helped me to think differently because I've got impact behind me. So I know the value of what I'm doing, not just as a business, as a product. And now I'm looking at replication and scale, and I'm thinking, अगर ये फिर business UK में जाता है या Africa में जाता है, तो वहाँ पे impact क्या होगा? So I think definitely for smaller businesses, if you can get into the sustainability space now, it's easier to do it early on, and that's why I'm glad when we had the conversation as well some time ago. Because the challenges of your business are very different right now than they will be in 5 years' time. And then you'll be looking at CSR and then ab kis tarah adopt karna. And it's difficult for businesses that are set up to adopt sustainability. Difficult's the wrong word. There are different considerations. If you're a startup, it's fluid and it's agile. You can choose many things to do very early on and adopt them and make it a way of practice, a way of business, and a way of life. And then if you've got verification and validation behind you, you can go to those organizations. Also, there's sustainable procurement as well. तो आप cottage industry की बात कर रहे थे. So for example, if there is someone who's providing chini, for example, and he's got the assessment behind him or her, they could go to a big multinational and corporate and say, can we supply you? Because before they may not be able to, and they would be told, Hamare already has suppliers. Now you say, well, I'm part of a sustainable procurement supply network. It doesn't exist, but we could create that. And I have an SDG assessment that gives my scores, and this is my ESG rating. And then the company might say, oh, well, that makes sense for us because then we don't have to do all the hard work. Hamari due diligence all day. So I think this direction of travel and the ecosystem is getting stronger, and I think the push and pull factors are very different now. So marketing on products is one thing, branding, raising awareness, platforms, impact investing. You see, they're all pieces of jigsaw, right? And you can fit them all in. And what's behind that jigsaw is sustainable development goals. So I think it's absolutely amazing. I love it. I think it's a universal language जो हम सब सीख सकते हैं. And like we said before, you don't need to know the full language, you just need to know एक दो जुमला. हाँ. बाकी सब चीज़ अपने आप हो जाएगी. तो मिल के काम करें. I think that's the way forward. चीनी लेंगे? No. Thank you. Right. तो अब तो अगर थोड़ा मुद्दे पे आते हैं, तो there's the SDG Me, which is helping companies comply with the SDGs and scoring them. So you know how sustainable you are and how sustainable you're not. Yeah. So you're opening up new avenues for them to actually expand in or get more investment. Yeah, so on that, it gives you a baseline. So just say, I know you're doing great work, right? But you have to explain that in an elevator pitch, or people need to know Saad ye kar raha hai with your tree stuff, right? But if you've got this assessment behind you, it validates that. It gives you scores, but it also tells you the impact. So when you're having a conversation with someone, you can say, मैं तो अपनी तारीफ ऐसे ही कर रहा हूँ, but look at this, right? So that helps. Definitely helps with impact investing. I'm not saying it's going to get you money, but it's certainly one more piece of armor in your arsenal that you didn't have before. So now you can confidently go. ESG is very important. And also, you know, so environmental, social and governance की reporting की requirement शुरू हुई है. More compliance than anything else. So what are companies doing in terms of their impact on the environment, on social issues, social related stuff, and obviously what are they doing in terms of governance? So they're underpinned by the SDGs and the human rights principles, and a lot of companies now are moving into ESG reporting services or taking ESG services because they need to write a report, because the requirements from international organizations are there. So just हमारे textile industry यहाँ पर है, उनकी requirement हो गई है ESG reporting के लिए, for example, because इनके जो clients are, same as EIA? let's say it's 10 steps further. 10 steps further. Yeah.
Yeah, and what I like about sustainability and ESG and that kind of framework is that it's bringing everyone together with universal language, and it's making it easier for Pakistani businesses, whether multinational or small, to compete in this global market space. Because now everyone's got to do ESGs and everyone's got to have sustainability reports and sustainability in their business. The ones that don't do it will get left behind. So that's why I think it's really, I can't even emphasize how important it is that companies get on board now, certainly with 7 years already in. But also, ESG shouldn't be seen as compliance, and it's still seen that way. CSR अपनी जगह अच्छा light fluffy है कर लेते हैं, but जब आप compliance की बात करते हैं तो सब चीज़ हो जाता है, पैसे देने तो वो compliance audits and stuff. So this sustainability and ESG, I think the corporates will never get out of the language of compliance because that's what is drilled into them. It's like you have to do it, no? So UN doesn't want to push, you have to do it. It's saying you should do. I want to go one step further to SMEs and startups, and that's where we had our conversation a couple of years ago, is it? I don't want to say you should. I think we could do this together, and let me help you, and let me raise awareness. दुनिया इतनी अच्छी होती तो अच्छी नहीं होती. But we know that's not going to be the case, right? Because we're here for a test. But it's like, if you know that you're going to get big and bulgy by eating all the kebabs, and I'm not looking at you for biscuits, but all the mithai and everything, तो फिर आप हाथ क्यों रोकते हैं? खाते रहो, doesn't make a difference, right? But there's something innate in you saying, limitation, right? It's the same goes when we look at doing good. It's the right thing to do. It feels good, it makes us feel good. जब हम सदका देते हैं अच्छा लगता है, या हम किसी के मुंह पे smile हमें नज़र आता है, we feel good. Or a छोटा बच्चा, you go outside and you give him a biscuit or something, or a lollipop or ice cream, whatever. It makes you feel. You're not doing it because you feel empathy. You're not doing it because you feel sympathy or bichara. You just, there's something that says ये करना चाहिए. I mean, why do you do the stuff you do, right? You could have gone and got a job in a multinational, and you didn't, right? So I think we won't all come together until we make dua for them that they can be good as well. And I think if we have that kind of mindset or perspective in life, then you'll see the value that you give and that you get. And जैसा आपको मेरा कोई such लेना देना नहीं है, but I like spending time with you and listening to you. And it's just that kind of connection that helps you then strive forward, right? Right. Awesome. So, carbon credits are a new avenue to explore. Compliance वाली जो ESG है, compliance नहीं है, but ESG is something that should be looked upon, and whenever you want to expand, it's something that should be there. It has to be there now. Yeah. And thirdly, SDG ज़रूरी है, please इसके ऊपर काम कर लें. Yeah, and I think whatever your kind of alignment with the SDGs, समझ आए नहीं आए, just reflect internally and think, what can I do that's good? What am I good at and that's good for other people? And do that, and you're already delivering on the SDGs. You don't need to, pick a goal and do it. So हमने बहुत सारी चीज़ें cover कर ली, the whole बहुत सारी ecosystem. कर ली, and it's a little overwhelming, but it's important. And but you see the common thread is yes, sustainability, right? It's all Doing good. sustainability. So we have a sustainability wall. Yeah, here. I was looking at that. And surprisingly, it just got pasted 2 to 3 years ago before Zabardast. your event. Oh, So I mean, excellent. आपके लिए किया है. Zabardast. And we're trying our best. On our personal level, I'm also planting trees all the time. I've planted over 15,000 so far. Wow. Not enough. अगले 5 साल में मैंने 10 million करने हैं. So you should team up with Nasir Bukhari. You know Nasir Ali Shah Bukhari? मुझे नहीं पता करा दे. I'll connect you. He's on our group, Leaders Wala group. अच्छा. So he was at the panel session. So he said then on that session as well, I think you just arrived a little bit after that he's got a mission to plant 1 million trees. So just team up, collaborate kar le. Because it's so much doable. Yeah. It's literally peanuts. You can plant, so in Sindh you can plant 10,000 trees in a day by only, I think it was what, 10 lakh रुपए, नहीं 5 लाख रुपए.
5 लाख रुपए in a day is peanuts. Because उसको ROI भी तो है ना, business point of view से देखा जाए तो. Yeah. तो Yeah, that's one thing we miss. So ROI, when you're involved in sustainable products or sustainability, the ROI is better. Oh. It's not been proven anywhere yet, but I've seen it already on my क्योंकि 5 साल के coffee. बाद the compliance and the taxes and everything on something that's not sustainable is going to be so much that you already have an edge. But also now you've got track record or demonstrable products like fair trade and organic that charge a premium. So sustainability isn't going down that direction, but I know certainly with coffee and other products as well, जिन 2 companies के साथ बात भी कर रहे हैं, वो अपने डब्बे के ऊपर या पैकेट के ऊपर लगाएंगे थप्पा. So UN का थप्पा तो आसानी से नहीं होता है, but SDG का थप्पा अगर लग रहा है, that's letting the public know that this product has got some inherent good behind it, right? And they may charge 2 rupees more for it. So it's not rocket science. Everyone right? would pay willingly. So आपके सामने वो ना, अगर आपके सामने 2 बिस्किट के पैकेट है, पे लिखा हुआ है कि this biscuit packet is going to harm a child's tooth because it's got sugar in it, and then it says we use less sugar, but you have to pay 5 rupees more. I think the majority would go with the pay. So who's paying for it? You're paying for it, right? The company is doing sustainability, but it's coming out of your pocket. I have an issue with that as well, but that's a conversation for another day. But you're right. It all starts with giving an option first, and once the consumer actually has an option, Yeah. everyone has a better side. I think the bigger picture, Saad, is going beyond options. जो fair trade organic के साथ होता था, अब sustainability के साथ क्या है कि you're part of the ecosystem. Mandatory gun. So you're being engaged, right? So I actually have a responsibility to educate someone, inform you, and communicate what I'm doing, and let you be part or enable or allow you to be part of my journey as well. So if you buy from me, you're helping me deliver on what I've made a commitment to my stakeholders. That's different from traditional capitalism. And I think that's where entrepreneurs will get, and I think that's what will happen in Pakistan. I think Pakistani entrepreneurs are doing that, but just not saying that. And I think with reports like SDG or assessments and these conversations around the impact that we're making, not just through the product, but through the Sustainable Development Framework, I think that's going to uplift entrepreneurs to the next level. It's going to get Pakistan more on the map globally. It's going to draw more investment. And I think we'll enjoy that work as well. And then we're all interconnected because I definitely believe this is an ecosystem. And if we don't take benefit of all of that, then that's on us. So that's my last point, right? I think it's an opportunity, and I think we should really leverage it. How can someone reach out to you when they want your help? Okay, so if you want my help, like everything, social media. Social media pe LinkedIn? LinkedIn is the easiest one because then I also get to see your profile. So it's not that I'm vetting you, but it's just that then when we have a conversation, I know a little bit about you, so it's not a blank call. Facebook or Instagram पर वो चीज़ें समझ नहीं आती है. So LinkedIn is the key one. If you're interested in assessments, whether you're a small company or a big company, SDG.me, so ME, the ME stands for Mapping Engine. SDGme.org is the website. Have a look through, but reach out to me on LinkedIn. We have a team here in Pakistan, a team in UK. We're expanding that. Agar coffee ke hawale se, to again LinkedIn and through you, right? So Alchemy is a coffee brand. Awesome. And then if you're interested in adopting the SDGs and you're an organization, then UN Global Compact is a custodian with UNDP in Pakistan. Again, reach me through LinkedIn, and the office there can run you through the process and the program as well. Perfect. And we definitely want to work with SMEs, so we need to have that conversation as well and maybe do some support We definitely will. mechanisms as well. Awesome. So yeah, सब Thank you. covered हो गया. इसको बंद कर दें, वीडियो को बंद कर देते हैं, and then we can chill. आप कोई बातचीत का सवाल है कुछ? So, uski koi track record, there's no rule book to that, there's no playbook, right? So what I got taught at school, not all of it is relevant today. Because I came with a traditional mindset कि बड़ा होके नौकरी, education, नौकरी, ये सारी चीज़ें. And now I'm in the entrepreneurial space, that rule doesn't apply. It's all about relationships, and it's also about being fair. And I didn't get taught that at school. I didn't get taught unfair, but it was just like,
प्रॉफिट आपने लगाना है और आपका प्रॉफिट का रिटर्न होना चाहिए, एंड यू डिटरमिन व्हाट दैट इज, एंड इफ द कंज्यूमर डजंट लाइक इट, यू फाइंड अनदर कंज्यूमर. So I think, just back to your point, I don't think the dynamics are quite there yet. I think a lot of policies need to change in all countries. I think Pakistan में जो हम पहले जो बात कर रहे थे और कर भी चुके हैं, excuse me, hack, जुगाड़, whatever you want to call it, पाकिस्तान में young people have just said कि हमने तो करना है. Whether you need government or policies or not, you're just doing it and बाद में हम देख लेंगे. Now, in my generation, that was बाद में देख लेंगे तो सवाल ही नहीं होता है. आपने सोच समझ के काम करना है ठीक तरीके से ताकि बाद में कोई मसला नहीं हो. And that anything else was considered bad. But if I look at this generation, and don't necessarily mean young people, I mean this time of way of doing business and startups, the same rules don't apply. So you're just saying, हम startup कर लेते हैं, फिर बाद में हम वो चीज़ें कर लेंगे if we need to, when we need to. And I think that's a good approach as well. I can't compare it to UK or Western economies because the environment I don't think is fully conducive yet for startups, even though UK and US say they are. If I compare the two, I think there's more opportunity here, and that's why I felt, certainly with Alchemy, I should set up here first, even though this is not considered marketing-wise a coffee drinking nation or a football playing nation, but I've also been involved in football as well, so I'm ready to disrupt the space. So it's the opportunity and the excitement and the journey and the adventure and then because I've got the framework of the SDGs के मुझे तो पता है ये चलना ही है, अभी जितनी लिखी है, but I'm doing everything that I should be doing in an environment that needs it the most, in the way that it should be done, so it should succeed, right? And I'm also testing the model as well. I could set up the same thing in the UK and it would be boring. I do have a setup in the UK and it is boring. No, I'm only joking. But I think यहाँ पे opportunities are there. From the doing business perspective, from the regulatory setup perspective, I think it might be easier to set up in UK, Europe. You go online, company setup, I think perspective wise लगता है बाहर business करना मुश्किल है, easy है. यहाँ भी थोड़ा मुश्किल है. यहाँ फ्रेमवर्क उस तरह का अवेलेबल नहीं है. कोई सेट अमेरिका में हो या बाहर हो तो यू हैव अ सिस्टम कि जी यही करोगे और इतने पैसे बन जाएंगे. पाकिस्तान में यू हैव टू यूज़ योर ओन ब्रेन एंड यू हैव टू मेक द सिस्टम्स. And I think you've used a good example. So for example, I'll use UK as an example. So if you're a new business, you know exactly what needs to be done. आपने कंपनीज हाउस पे जाके अपना कंपनी रजिस्टर करना है, आपने फिर आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाके वेरीफाई करके बैंक में जाना है, बैंक अकाउंट खुलाना है, आपने HMRC पे रजिस्टर करना है, आपने टैक्सेस फाइल करना है, अपने करना है. So there's a process for anyone and most people know that process. आसान नहीं है but आपको पता है. So you know, then you think, right, do I need to set up, if I'm setting up my business, these are the things I need to do, do I want to do it, yes or no, and then you move forward. Pakistan के अंदर because you don't necessarily know that framework or that process, so मुझे भी जब set up, अच्छा मुझे क्या के लिए register करना है, I have to register for GST and I have to register for this and I have to do this and I have to do this. It's like, oh my gosh, that's just so much work. फ़ायदा है कि नहीं है, just छोड़ो या नहीं करता. I mean, we did it, but it was like there was no one place you could go to ask. I didn't understand the process, so I had to. वो वही है ना, अभी कुछ आता है तो कहते आपने इसके लिए रजिस्टरिंग किया, अच्छा ये करना था. But you can get away with it easily. Yeah, but I'd rather not. I'd rather do things the right way. So I was just speaking to a customs official the other day and saying, all right, can you help me navigate this space because I want to do things the right way. Because it's a coffee के ऊपर, for example, green beans के ऊपर, it's treated as a pharmaceutical drug. Yeah, उसकी कोई categorization नहीं हुई है. So it's caffeine, right? So उसकी अलग एक percentage. चाय पे नहीं है. चाय पे टैक्स नहीं है, but it's a different rate. But चाय में कैफीन है, but coffee को उन्होंने recategorize नहीं किया है. Okay. So it's still classified because coffee की demand इतनी नहीं थी ना. So it was just caffeine, right? अब वो change हो रहा है, so that's good. So if you can do both, then nothing like it, right? For example, मेरा background artificial intelligence related है और मैं अभी final year project जो कर रहा हूँ PCSIR, Pakistan Council for Scientific Industrial Research. उनके लिए product है, innovative product है, जो वो available नहीं है.
प्रोडक्ट जो है वो अब अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर PCSIR में बेसिकली आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं फूड के और डिफरेंट उनकी क्वालिटी की टेस्टिंग होती है। इवन के बॉटल भी है ये PCSIR से अप्रूव हुई होगी तो फिर यहाँ पे मार्केट में लॉन्च हुई होगी। तो एक एल्युमिनियम की फॉयल है जिसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसकी क्वालिटी टेस्ट करनी है और उसके अंदर हमने AI बेसिकली इन्वॉल्व किया है कि वही उसके क्वालिटी की जो हम लोगों ने पैरामीटर सेट किए हैं उनको डिटेक्ट करे। तो इस तरह का अगर मेरा कोई अपना कोई मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ AI से रिलेटेड, तो पाकिस्तानी मार्केट में क्या इतनी इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो इतनी जल्दी लोग नहीं अडॉप्ट करते ना, उसको क्या कहते हैं अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मुझे कौन सी मार्केट को स्पेशली टारगेट करना चाहिए स्टार्ट के लिए? आई थिंक सो ऑन दैट आई वुड ऐड कि बहुत सारे AI पे एक्सेलरेटर्स और इनक्यूबेटर्स दुनिया में काम कर रहे हैं। If you start pitching there and get incubated in something, or so startup actually provides a platform कि आप किसी एक्सेलरेटर में हमारे थ्रू हम आपको बाहर भेज देंगे, सही है, पाकिस्तान से बाहर हम आपको एक्सेलरेटर में आपको आपकी कंपनी इस्टेब्लिश भी होगी, सब कुछ होगी एंड यू स्टार्ट डूइंग ए बिजनेस देयर। पाकिस्तान येस इट्स अ फिनोमिनल मार्केट, मगर फॉर अ फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोडक्ट जिसकी थोड़ी बहुत ही नीश एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप शायद महीने के करोड़ों रुपए कमा सकें इस इंडस्ट्री से, ज़्यादा कुछ वो है नहीं। तो उसके लिए पहले बाहर इस्टेब्लिश करके फिर पाकिस्तान में भी सर्विसेज, जैसे उन्होंने कहा कि दोनों तरफ करें, यहाँ भी करें। यहाँ पे पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे इन्होंने कहा कॉफ़ी में डिस्टर्ब करूँगा, इनको 5 साल तो पहले एजुकेशन करनी पड़ेगी कॉफ़ी होती क्या है। That's what we did. पहले 2 साल 2019 में हमने आई डोंट थिंक अभी भी आपको बहुत करने की ज़रूरत है। नहीं, exactly. So 2019 is when we set up Alchemy Private Limited, and I remember, thanks to people like Rasik Ismail and Faraz Khan, I was doing pop-ups at Koyal and private events, and it was ये ले कॉफ़ी, इसको स्मेल करे, हाथ में रब करे, अभी इसको चबाए, अच्छा क्या महसूस हो रहा है, अच्छा ठीक है अभी हम पियेंगे, स्लर्प टेस्ट है, ये करके। We were not drinking coffee, I was educating them कि ये इंस्टेंट कॉफ़ी थी, अब ये है, ये फ्रेश कॉफ़ी, ये इस तरह वर्क होता है, ये कहाँ से आता है, मैं किस तरह उसको रोस्ट करता हूँ, सामने रोस्टर मैं जाके मशीन के अंदर डालता हूँ, 12 मिनट उसको देखता हूँ, स्मेल करता हूँ, फिर वापस आप चूल्हे पे कुछ पका रहे हो, बेसिकली दैट राइट। एंड देन इट स्टार्टेड टू पिक अप, इज लाइक अच्छा ठीक है अभी ये छोटी सी इकोसिस्टम बन गई मार्केट की, रेगुलर लोग खरीदने वाले हैं, बट इट्स स्टिल it's tough. It's a tough market, especially if you're in something new. But you gotta have the conviction, right? And if you are passionate about what you're in, and you wake up every day, we didn't talk about this, but if you wake up in the morning, I mean, so I wake up in the morning and I don't think, oh yeah, I love what I do. So I'm in sustainability, I'm in coffee, and I have 3 verticals that integrate in terms of businesses. I wake up every morning and I think, Alhamdulillah, I'm doing the thing I love the most with my 2 best friends, and ठीक है पैसे जितने बनने चाहिए शायद नहीं बन रहे और बन जाएंगे, but I mean I'm living the dream. I mean people work in 9 to 5 jobs and no discredit to them, but वो अपनी fulfill कर रहे हैं ambitions के नहीं कर रहे मुझे नहीं मालूम। I know when I worked in investment banking I was like ये कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब और कुछ होगा, और क्या कर सकता हूँ, I can do so much more, I want to do so much more. And I want to go out and plant trees and water wells and stuff, but it was just like, come. So I get complete fulfillment and contentment with the stuff that I do, and I get to talk to people as well. And there's never enough hours in the day. But if you can find a balance of what you're passionate about and what you love, that's one thing. The incubator, absolutely. And then try, I would say, just my own advice to anyone that's thinking about overseas, whether you're in Pakistan and looking at Europe, or you're in Europe and looking at Pakistan, grass always looks greener. Yeah, I've lived in the UK since I was a child. Tangi aa gaye, kya masla ye sari cheez, it's got to be more, I want to go to America, all this kind of stuff. Came to Pakistan, loved it, and it's like, kya, and then you get hit with all the politics and stuff. Leg pulling, accent, कपड़े पहनने का तरीका, वो सारे चीज़ें वापस चलते। Lived in other countries as well, and it's the same everywhere. Everyone has their own inherent issues and challenges, and if you can use that to bring yourself together, and it doesn't matter where you are, enjoy where you are, enjoy it to the best of your abilities, make friends, establish relationships, and then business फिर आप ही आप हो जाता है।
So you saw on our WhatsApp group, how old are you now? 19, 20? I just turned 21. 21. So Saad knows more people at 21 than I knew just until recently, right? So that's because you're putting yourself out there and you're connecting with people and you're saying, I don't want anything from you, I'm just here to help and support, right? And it doesn't matter which country you're in, you've traveled the world. So business karne ka ye is tarah, I think, tarika, relationships. Be good at what you do, be sincere. And then if you're thinking of opening in different countries as well, just be mindful that grass does look greener. Jo aapke ird-gird mein hai, aap wahan kar sakte hain na, you understand that territory better. So I would always say start there, because it's, at least you know. Even with the challenges, you know, right? So one thing, for this gentleman, like I also worked on my final year project when I did engineering, and we worked on solar, and we tried to enhance its efficiency, but it was just a project, and when we passed out from university, just we left it and went into the industry and worked for the oil industry. So for him, I'll suggest him to find the gaps in the industry, in the local industry, and identify the gaps and work on it and see how you can help the industry with your AI knowledge. And this industry will welcome you desperately, and they are looking for the solutions. So instead thinking that you get a big project and then you will see where you will utilize it and who is going to hire you or get this, try to get the project which this local industry really needs, and try to work on that problem, come with the solution. Because in last 10 years I have seen many students, yes, few of them, they have worked on the big thing like extraction of ethanol from sugarcane, and there are a lot of big things which appeals you, like great idea, but there is no local utilization of that prototype. So I guess I'll suggest you to work on the things which your local industry needs, and once you're on it, trust me, the industry will call you, they will invite you, they will get benefit from you, and this will be a good start for you for your career as well. There's one more thing I want to suggest for the all technical startups and tech startups. The thing, I've worked with a tech startup as well, Saad knows it. What we do in general, the tech startups, they make it very much of something कि जो बहुत hard होती है to understand, मतलब वो simplify नहीं होती. That's not usually simplified. It like tech lingos are mostly used in these startups. That optimization, automation, utilization, wordings like that makes it pretty hard for common people to understand it. So whenever you are working on something, make it generic, make it simple, जो कि general आवाम को, लोगों को it gets into their mind के what simplify करके. So that's one point that. That's what we're saying about sustainability. उसको बता तो सकते हैं, but असल चीज़ में क्या है कि how to do things in a good way and in the right way. I would just say if you're doing stuff on AI, then connect with me via LinkedIn. Let's have a conversation. I might suggest if you make a platform, maybe we can do something around that. I'm going to look at benefit as well. And then that gives you the platform to then talk about that within the next UN event. Now, I don't know, I'm just thinking off the top of my head. So if there's something that's been demonstrated that's sustainability related, then that's going to get more traction, more ears to look at it, because it's relevant, like you said, simple language. It's still technical language, but it's relevant because it's hot topic. And that may just help give you a little bit more confidence about what you're doing, but also direction, and also एक test भी आप कर रहे हैं ना कि मुझे इस lane में चलना है, इस lane में चलना है, इस lane में चलना है. And sustainability is, like you said, about identifying a gap in the market. It's definitely, there's a huge gap in the market. That's why there's another 7 years left of it. That's one of the reasons why we developed the tool as well, so that when we put the 7-year program with the product, and we're on version 3 now. So yeah, connect up with them with that. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद वाला है. अच्छा, किसको नहीं पता मैं कौन हूँ? सॉरी, थोड़ा सा बता दें आप. फिर आप ओके, आपको भी नहीं पता ना? ओके.
चले, ये अली भाई हैं। अच्छा हाँ, आपको भी नहीं पता। जो सोशल मीडिया इंक्यूबेटर है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, सही है, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। मगर स्टार्टअप ग्राइंड के नाम से एक और कम्युनिटी है जो सोशल मीडिया इंक्यूबेटर का पार्ट है, और हमारे यहाँ हर सैटरडे को, हर हफ्ते को एक इवेंट होता है जिसमें हमें किसी स्पीकर को बुलाते हैं। वो स्पीकर सिर्फ कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ नहीं होता, वो एक ऐसा बंदा होता है जिसने अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में सच में बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया होता है। जैसे कल मेरे साथ जो टॉक थी वो थी एयरलिफ्ट के को फाउंडर से। एयरलिफ्ट का नाम किसने नहीं सुना? एयरलिफ्ट का नाम सुना है? वो एक बस सर्विस, उन्होंने 220 अरब रुपए रेज़ किए थे सिर्फ 3 साल के अंदर, और वो पाकिस्तान में लगाए थे बाहर से ला के। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो सच में महारत रखते हैं अपनी फील्ड से, उनके लिए हम टॉक रखते हैं। तो अभी एक साहब आए थे, वो यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करते थे और वो अभी बोल के गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर हफ्ते यहाँ पे स्केड्यूल हम लोग लगा देंगे कि कितने बजे टॉक होती है, उसमें ज़रूर टाइम पर आएँ। हाँ, शेड्यूल ऐसा हो कि सब टाइम पे आ सकें, उसके लिए फीसिबल हो। अच्छा, एक और चीज़ जो हम कराते हैं वो ये है कि पिचिंग प्रैक्टिस, कि अपनी आइडिया को, अपनी जो भी सर्विस आप लोग बेच रहे हैं, अपना कुछ भी मंजन, हर एक कुछ ना कुछ बेच रहा है, वो किस तरह बेहतर करें, तो उसकी प्रैक्टिस कराएं। तो उसको हम रिकॉर्ड करके आपको क्लिप भी दें कि ओके, अब आप फीडबैक लेकर आएँ और अगले हफ्ते वापसी आके पिच करें स्टेज पे कि मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। और हमारे साथ यहाँ भी लोग होंगे जो आपको उसी वक्त फीडबैक दे रहे होंगे। तीसरा, हम जैमिंग सेशन भी करते हैं, तो हर हफ्ते यहाँ पे म्यूज़िक भी होगा, आराम से चिल करें, आए चाय पिएँ और सुकून से बैठें। तो अभी आज की जो पिचिंग प्रैक्टिस है वो शुरू करा रहे हैं। पिचिंग में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो ये होता है कि हमने जो बंदा है जिसके आई कांटेक्ट बनाएं, उसके आंखों में आंखें डाल के देखें कि उसको वो ट्रस्ट करे और वो इधर उधर देख ना सके। वो भी फ़ोन में देख रहा है तो उसको हम ताना मार के उसको उसकी आंखें ऊपर करें और फिर उसको देखें तो वो आपसे देखना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली आपके बिल्कुल पीछे जो लड़का बैठा हुआ है ये भी फ़ोन में, तो इसी तरह तो वही तो पिच करते हुए आप जब तक दूसरी का अटेंशन नहीं सबसे अच्छी तरह ग्रैब कर सकते, तो आप उसको अपना आइडिया कैसे पिच करेंगे। तो हम सब यहाँ पे कोई ना कोई सर्विस बेच रहे हैं, मैं भी कोई सर्विस बेच रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा, हम लोग एलिवेटर पिच की प्रैक्टिस करेंगे। एलिवेटर पिच में होता है कि 30 सेकंड्स के लिए आप किसी के साथ लिफ्ट में बंद हैं। 30 सेकंड्स के अंदर आपने अपने आइडिया पिच करना है कि वो आपको मीटिंग दे दे, बस ये पिच है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, फिर हम अली भाई की कराएंगे कि अली भाई क्या कर रहे हैं, एंड देन आईड लाइक कि जो भी ऑडियंस में है, तो आपने सिर्फ उसकी ऐसे उसको ग्रैब करना है, उसकी अटेंशन को, कि वो आगे आपको टाइम दे दे, बस और तो कुछ भी नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा नाम सादुल्लाह वाला है, मैं स्टार्टअप ग्राइंड कराची का एक डायरेक्टर हूँ। और हम लोग आप कराची में रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, इतनी प्रॉब्लम है कि मतलब घिन आती है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक सेंटर बनाया है शहीद मिलत पे। वहाँ पे हम काम करें 150 अलग अलग लोगों के साथ जो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के हमारे पास आते हैं, हमें टाइम देते हैं, अपने टाइम इन्वेस्ट करते हैं और अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो आईड लाइक कि आप बस आधे घंटे का मुझे टाइम दे दें और सिर्फ देखिए आके हम लोग करते क्या है, एंड देन आप बताइएगा इफ़ यू लाइक इट, एंड देन वी लव योर सपोर्ट ऑन दैट। सही, चलो जी, बॉस ने टाइम दे दिया 30 सेकेंड्स के अंदर। तो इसी तरह अब अली भाई पिच करेंगे और जो भी है यहाँ पे किस तरह आप अपना मंजन है। अच्छा, अब इसमें तो चले मैंने इस स्पेस को बेचा और मैंने सिर्फ उसका अटेंशन ग्रैब करी। दूसरा ये होता है कि आप दूसरे को बोलें कि खिज़र यार तुम्हारी शर्ट बहुत ख़राब लग रही है मुझे, लेकिन आई थिंक कि मैं एक तुम्हें बेहतरीन सी शर्ट बना के दे सकता हूँ और उसमें ये खसूसियात हैं, और मैं इस मार्केट से ख़रीद के या इम्पोर्ट करके यहाँ पे तुम्हें बेचूँगा और तुम्हें 3 दिन में पहुँच जाएगी, तो आप फिक्र ना करें, पहला फ्री सैम्पल मेरी तरफ से। तो इस तरह अपनी जो भी सर्विस है, कैनवा के थ्रू है, डिज़ाइन की सर्विस है, वो आपने ईमेल पे तो पिच कर ही रहे हैं। तो अगर आप फ़िज़िकली, क्योंकि उनकी मीटिंग इवेंचुअली होती है, तो उसके लिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिस कराएंगे। तो अली भाई प्लीज़ आप दूसरा माइक ले दें, साथ पकड़े ना हाथ में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंवर-बवानी है, मैं कराची सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में होता हूँ। यहाँ पर हम बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं कि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो फ्रीलांसिंग क्या होती है, हमें बच्चों को ये सिखाते हैं और फ्रीलांसिंग के थ्रू उनको मेंटोरशिप देकर पूरे 6 महीने की जर्नी प्रोग्राम करवाते हैं। तो उसमें ऑफ कोर्स आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग इसमें आएँ
और इस जर्नी प्रोग्राम के बारे में जाने कि कैनवा, फाइवर, अपवर्क, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें आप किस तरह काम कर सकते हैं। तो इस जर्नी से आप $500 महीना कमा सकते हैं। तो कैसे कमाएंगे वो ऑफ कोर्स जानने के लिए हमारे पास सेंटर में आप आएँ, आधा घंटा निकालें और इसको पूरा एक्सप्लोर करें। थैंक यू। तो दिस वाज 45 सेकंड्स। अच्छा 45 सेकंड ये सुनने के बाद आप जाएंगे इंक्यूबेटर या नहीं जाएंगे? हाँ, इसको वापस रिवाइज करें। आप जाएंगे? आपको समझ आया क्या करते हैं? क्योंकि ये तो बिल्कुल नए बंदे हैं। ठीक है, ओके। समझ आया क्या करते हैं? लेकिन कन्विंसिंग नहीं था। मगर इनका मंजन नहीं ठीक है। खरीदेंगे ना? हाँ, सही। ओके। बस अगले हफ्ते आप पिच सही करके आइएगा। नहीं अभी कर लेते। नहीं अगले हफ्ते। अभी अगले हफ्ते वापस तक कर आपको लेते हम हैं। वीडियो दूंगा, आप करेंगे सबको एक ट्रायल। ओके फाइन। अब आप आए एक मिनट के लिए कुछ भी जो भी करते हैं सिर्फ बताएं दूसरे को, इंटरेस्ट दिला दें अपनी ज़िंदगी में। जो भी करते हैं अस्सलाम, मेरा नाम आदिल सुहेल है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं साथ साथ में AI बेस्ड प्रोडक्ट्स भी करता रहता हूँ और इससे रिलेटेड मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर AI से रिलेटेड जो है वो अपने सर्विसेज देता रहता हूँ। और आपसे लाइफ से रिलेटेड मैं कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड गाइडेंस या हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हैं। और मतलब मैं फेसबुक पे उनको उस साइट तक पहुंचा रहा हूँ, फिर वो मेरी पूरी प्रोफाइल विजिट करके हो सकता है और अट्रैक्ट हो जाएं। बेहतरीन। कोई मंजन खरीदेगा इनका? सेकंड मीटिंग देंगे? सेकंड मीटिंग देंगे? समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आया। आपको समझ आया क्या करते हैं? it was a lot थोड़ा सा। अलॉट and Yeah, it it's could like- have been better. ओके। ये है कि he is He was just prescribing his हाँ नहीं मतलब introducing. अगर ये सेकंड मीटिंग मांगे तो उस पर इसके बाद आप दे देंगे? नहीं ये मेरे ख्याल में इस पर फोकस नहीं कर रहे थे कि ये कहाँ है, क्या इंट्रोड्यूस कर रहे ये तो हाँ या ना का सवाल है ना। Second सेकंड मीटिंग देंगी नहीं देंगी? नहीं चलो शायद थोड़ा डिफिकल्ट साइड। नहीं कोई मसला नहीं। एंड दिस वाज आई थिंक इट वाज वेरी गुड क्योंकि आई थिंक पहली बार इस तरह किया है ना पिच। बस थैंक यू। मैं लोगों को अमीर बनाता हूँ और जिनकी नौकरी नहीं होती उनकी नौकरियाँ हकवाता हूँ। उसके लिए एक ज़रिया होता है कि हम ई-कॉमर्स के ज़रिए से कस्टमर्स जो होते हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। तो हमने ऑलरेडी जो है लोगों को 50 से 60% उनका पैसा इंक्रीज़ करके दिया है और एम्प्लॉयमेंट्स भी जनरेट करके लिए हैं और टेंस ऑफ थाउजेंड्स हमने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करें कस्टमर्स के लिए। तो अभी हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और वी कैन सर्व यू एज वेल। सो join us and have a meeting with me accordingly. आई थिंक इस कहानी में ना जो इंट्रो बहुत होता है ना सही बस वो गायब था। बीच का मिडिल पार्ट और फिनिशिंग थी, बस स्टार्टिंग मंगा दी थोड़ा सा ठीक पार्ट है, जो था कि मैं हूँ कौन। मैं सलाम मैं Okay. जलीस हूँ, मैं ई-कॉमर्स का एक्सपर्ट हूँ और मैं ये फिर नहीं एक्सपर्ट तो नहीं हुए। अरे लेकिन पिच आपने करनी है ना, आपको 30 Yes. सेकंड में सब कुछ बताना है उसको। ओके सही है। तो इसमें एंगेज भी रखना है। क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आनी थी? आपने उसको प्रॉब्लम सही से बताया नहीं मेरे ख्याल से। लोगों की अमीरी का मसला है, पैसों का मसला है, नौकरी का मसला है, तो वो प्रॉब्लम है और वो हम हल करते हैं। उसका तरीके लेकिन आपने कार अपने क्या आपको है? तो बताया नहीं मैं कौन हूँ। अच्छा, अभी तक लिफ्ट में ओके। किसी के साथ घुसे हैं? It's going to be five seconds, I think so, for introduction. हाँ Elise, I work in e-commerce industry. Okay, got it. So ये 5 सेकंड और कुछ चीज़ नहीं? बाकी है, अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें हैं वो खुद ठीक ही है, आप थैंक यू। आ जाओ। कोई मसला तो नहीं है ना? ये लो, Hi. चल थोड़ा सा इधर। यस अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आमना जमशेद मोहम्मद वाली है और मैं रेहान सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ फ्रीलांसिंग का काम करती हूँ। मैंने फ्रीलांसिंग में काफ़ी कुछ सीखा है। मैं कैनवा पे इमेज बनाना सीखती हूँ और फाइवर पे उसको सेल करना सीख रही हूँ और मेरी उम्र जो है वो 13 साल है और मैं कॉन्फिडेंस बिल्डर कोच का भी अब काम शुरू करने लगी हूँ। अच्छा लेकिन अब तुम वापसी बोलो, तुम्हारा कस्टमर आ गया है, वो कह रहा है मुझे तुमसे कैनवा पे सामान ख़रीदना है, उसको तुम किस तरह बेचोगी, कन्विंस किस तरह करोगी? वो अभी सीखा थोड़ा सा गलत करना है, गलत बताना है, बस बताना है। बताइए क्लाइंट क्या बेचती हो?
मैं ये बना सकती हूँ आपके लिए, और मैं बस ये सबसे फ़र्क करती हूँ। मैंने कि अपनी सर्विस बताने के मैं क्या Yes. दे, मैं जो हूँ वो मैं बिज़नेस कार्ड बना लेती हूँ, और मतलब के कार्टून इमेज भी बना लेती हूँ, और मैं वो सर्विस बहुत कम पैसों में दे रही हूँ। आप मुझसे $5 में 10 इमेजेस बनवा सकते हैं। वाह, चलो बस अब तुमने ये वीडियो देखनी है और देखना है, नहीं, इसको वीडियो देखनी है और फिर देखना है कि दूसरों से मशवरा लो जो तुम्हारे कस्टमर्स हो सकते हैं कि मैं इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकती हूँ, और वो तुम्हें बता देंगे। एंड देन अगले हफ्ते मास्टर पिच। आ जाओ जल्दी से, टाइम निश्ता चल। अस्सलाम वालेकुम। ऑडियंस यहाँ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ 9th क्लास का, और साथ ही साथ मैं एक फ्रीलांसिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं फ्रीलांसिंग सीख रहा हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज। अपना मंजन बेचना है। वो कैसे बेचेगी? ईमेल क्या करते हो तुम? चैट जीपीटी से क्या ईमेल बना के भेजते हो? चैट जीपीटी से बोलते हैं, वो ईमेल बनाता है कि मैंने अपनी सर्विसेज देनी है, आप मुझे बताएं। एक ईमेल राइट तो जो भी लिखता है ना, तो तुम थोड़ा बहुत रट गया होगा, इतनी ईमेलें भेजी हैं तुमने, बता दो, बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं आपके रेस्टोरेंट की सेल्स को बढ़ा सकता हूँ। मैं आपके रेस्टोरेंट्स की डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म, मतलब डिफरेंट से जो आपकी सेल्स आप लगाते हैं, उनको मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर सकता हूँ, उनको मैं मार्केट कर सकता हूँ, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपकी जो सेल्स हैं उनको मैं बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि आप फेसबुक पे आप देख सकते हैं कि मैं आपकी जो रेस्टोरेंट की सेल्स होंगी, मैं उनको मार्केट प्लेस कर दूंगा, मतलब मैं आपकी सेल्स को मार्केट कर दूंगा, आपके ऑडियंस को, आपके जो कस्टमर्स होंगे उनको बढ़ा दूंगा, और आपकी डिफरेंट तरह से, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मेन्यू कार्ड्स और लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह से आपकी जो वो सेल्स है उनको बढ़ाऊंगा। खरीदेंगे मंजन? जब आप एक सेकंड मीटिंग देंगी? थोड़ा सा क्यूरियस नहीं होंगी, नहीं? आप सेकंड मीटिंग देंगे? सोच सकते हैं थोड़ा सा, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्या इम्प्रूव कर सकते हैं आपके ख्याल से? कॉन्फिडेंस चाहिए है ना? और आई थिंक थोड़ा सा दूसरे के बारे में, क्योंकि अभी तो फेक कर रहे हैं ना, थोड़ा सा दूसरे के बारे में स्टडी करो, उसके बारे में बोलो मैंने ये देखा था कि आपके रेस्टोरेंट की इतनी सेल्स है इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं आपको इस पे जाने में मदद कर सकता हूँ इसके थ्रू। तो उसमें बेसिक आपने बताई दी ना, आई कांटेक्ट। हाँ, इन्होंने सिर्फ कैमरे को देखा, इन्होंने इस तरफ नहीं देखा। किसी को भी देख लो, जो भी खूबसूरत लग रहा है यार, ये तो खूबसूरत है, इनको देखो। आ जाओ। उस हिसाब से कुछ नहीं दिखा रहा। आप क्या बेच रहे हैं वैसे? स्टार्ट किया, क्या बेचना चाहते हैं बस वो बता दें। क्या आपको लगता है आपकी नीश क्या हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फ़ारूक है। मैं वैसे बेसिकली फ़ेसबुक पे मेरा नाम है उमर इनकम वाला। तो मैं फ्रीलांसिंग अभी स्टार्टअप मैंने किया। मैं स्टूडेंट हूँगा रेहान अल्लाह वाले इंक्यूबेटर में, सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में। और फ्रीलांसिंग में मेरा बिज़नेस कार्ड हो गया, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं बनाना भी सीख रहा हूँ और उसको फाइवर पे सेल अप करना। उससे आपको क्या लगता है क्या बेहतर कर सकते हैं? खुद ही बताएं। आप अपना मंजन खुद खरीदेंगे? कैसे खरीदेंगे? इसको कैसे? वो तो कोर्स क्या बेहतर करेंगे? ज़रा डीप, सॉरी, कुछ भी बता दें। बोले मैं कलरफुल शर्ट पहन कर आता तो बेहतर ख़रीदते, या मैं चश्मे पहना होता, या मैं स्माइल ज़्यादा कर रहा होता, कुछ भी हो सकता है ना। मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंट। हाँ चलें, बस अगले हफ्ते आएंगे, अगले हफ्ते वापसी करें। थैंक्स शारिफ भाई, इतने लोगों की वीडियोस आपने बनाई हैं, आपको पता है लोग कैसे एक्ट करते हैं, अब आपके एक्ट करें। आप अगले कैफ़े के लिए लाभ है, आ जाए। मैंने क्या बोला तुम्हें?
और मैंने क्या बोला? आप आ जाएं, क्या? क्यों? आप पिच करें। क्यों? Why? अच्छा, आप बहुत सर्विसेज देती है ना, मुझे बेचती होती है, अब आप सबको बेच। मैंने तो कुछ नहीं बेचा। आए Alright. इधर ही रखो, सिर्फ ही रखो मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ। Alright, Assalamualaikum everyone. My name is Arif Asidpurwala and I am most commonly known as the relationship and communication specialist. मैं लोगों को emotional intelligence, communication skills, healing, trauma healing, मैं ये सारी चीज़ें लोगों को सिखाती हूँ and my prime clientele is single people, committed people, married people, people who have a broken heart, people who want to go through a journey of healing and get empowered. Is the kind of people that I provide services to. मेरी services like सबके लिए एक सी हैं. I don't basically discriminate among anybody. It's not like men versus women or anything. Anybody who's had a broken heart or who wants to invest in themselves, who wants to become more emotionally intelligent, who wants to negotiate and sell like a pro and be confident in their skin and in their vulnerability. I'm their go-to. This was a 60-second pitch. Oh, I say and a lot. I don't think it was a pitch. It was more of an introduction. Yeah. You want a pitch? Okay. इसका दिल टूट चुका है. इसको pitch करें अपने services. Wow, that's hard. That's just hard because. देखें, आप रोड पे खड़ी हैं, सामने बंदा है, आपको पता है उसके फ़ोन में गोल्ड का आईफोन है, उसका दिल लेकिन टूट चुका है. क्या करेंगी आप ऐसे ही चलते चले जाएंगी या उसके पास जाके अपना मन में बेचने की कोशिश करेंगी? मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मेरे पास कोई आता नहीं? उसके मुंह पे लिखा हुआ है, माथे पे लिखा हुआ है उसके. यार ऐसे नहीं. परेशानी से. सॉरी. परेशानी से दिख रहा है. मतलब जब भी आप परेशान होते हैं तो आपको वो तो ज़रूरी नहीं ना कि गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है. कुछ ना कुछ अपने आप से भी हील होना है ना. अभी हील इज अ मैजिकल गॉड है के पास. लॉजिक की कम्युनिकेशन. वेल मैजिक वॉन्ड नहीं है, टेक्स टाइम. आप कम्युनिकेशन की पावर ना कुछ जादू करेंगे आप. तो वही आप कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगे तो वो क्लाइंट. So okay, my pitch generally because as a service provider, अच्छा थोड़ा सा मैं इधर सीरियस हो जाऊंगी because मेरी इधर कोई 30 सेकंड की पिच नहीं होती because I'm a service provider और हर सर्विस प्रोवाइडर की जो पिच होती है वो थोड़ी सी 10 से 12 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होती है. Otherwise you can't make a sale, right? That's the so you're trying to get him to start the pitch we get to know about the person. और मेरा जो स्पेसिफिकली जो मेरी सर्विस है उसमें ऑब्वियसली प्यासा कुएं तक चलकर आता है. हम अनसोलिसिटेड किसी को अपनी सर्विस बेचने नहीं जाते बिकॉज ज़बरदस्ती मैं जबरन किसी को कहूँ कि आप चेंज हो जाओ या आप हील हो जाओ तो मेरा तो काम ऐसा है ही नहीं. सो दैट डजंट इम्प्लाई बट so we get to know about the person, we get them to tell us our history, their history sorry, कि आप अपने बारे में हमें बताएं. we empathize with them, we provide them a listening ear और active listening होती है. उसके बाद we empathize with them all along जब वो अपनी पूरी हिस्ट्री हमें बता रहे होते हैं. they can get really really vulnerable. बहुत दर्द भरी कहानियाँ सुनाने के लिए लोग आते हैं हमारे पास. and then that is when like 5वें-6ठे क्वेश्चन के बाद is when I pitch that what would it feel like आप इस जोन से, जिस भी जोन में आप हैं, जिस भी दुख में अभी आप हैं, what would it feel like when you got out of it? How would you be financially, emotionally, physically? आपकी क्या उस वक्त स्टेट होगी आज से let's just say 1 साल के बाद after working with me? So they're like, oh, I can feel it and I feel very confident and I feel healed and I feel कि मैंने दुनिया पे अपनी मुराद पा ली है. I have become peaceful. I found peace within myself and in my skin and in my vulnerability. That is when 9वें-10वें क्वेश्चन पे we're like, ठक, okay, would you want to work with me? And 8 out of 10 times they don't say no. So it's kind of like a whole journey. Because हर सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो इधर मेरी बात से एग्री करेगा that whoever is a service provider, you kind of have to take them through a journey. People invest in emotions, they do not invest in a product or a service. Yeah? Make sense? Yeah, that's it. आप मजन खरीदेंगी? सोचेंगी सेकंड मीटिंग दे देंगे. ओके सो मेरा CTA होता है, इंट्रोडक्शन तो नहीं होता बिकॉज जनरली फेसबुक ग्रुप्स पे या बहुत सारी जगहों पे आई एम अ पैनलिस्ट. सो लोग वहाँ पे ग्रुप्स पे देयर आर लॉट ऑफ विमेन ओनली ग्रुप्स वेयर देयर कंप्लेनिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स एंड अदर देन दैट भी मेंटल हेल्थ इशूज़ होते हैं, जेनेरिक प्रॉब्लम्स होते हैं. सो आई गिव देम देयर सोल्यूशन इन द कमेंट सेक्शन एंड देन मेरा 2 लाइन का CTA होता है दैट आई एम अ रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट हु हेल्प्स
people, single, committed and otherwise, to build themselves better before they can find someone to spend their life with, and hope this finds you well. It works like a charm. मेरा inbox भरा हुआ होता है. Yeah. सही. अगले हफ्ते आपने सेशन देना है या अपने बाप को बेच देंगे? I'd love to. मुझे पता है, वो तो दिख रहा है. आपको तो मैं 30 सेकंड दिया था, आप 5 मिनट में उठी. You love me, Saad. नहीं, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें. जनाब बोलो. तो क्लास को यहाँ पे कंडक्ट करना है. सैटरडे की क्लास यहाँ पे. अली भाई यहाँ प्लीज़. जनाब. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद गौस है. मैं प्रोफेशनली प्रोक्योरमेंट मैनेजर हूँ और मैं जिस वक्त का प्रोक्योरमेंट मैनेजर हूँ सब काम मैनुअल होता था. यहाँ पर मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आया हूँ. माशाल्लाह. मैं चाहता हूँ सॉरी मैंने बेचना है. नहीं अभी तो आप चले इंट्रोड्यूस करें तो कर लें, फिर उसके बाद बेचना भी है. नहीं बेचूँगा क्या मैं. तो लोगों को पता तो चले आप हैं कौन. सही. तो हॉस्पिटैलिटी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर रहा हूँ. हॉस्पिटैलिटी कहाँ पे? हॉस्पिटैलिटी मतलब नहीं मतलब कहाँ पे काम करेगा? मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई स्पेंड इन दुबई. दुबई. तो वहीं पर ही मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है. चलो. तो उसमें यह है कि अपने आप को अपग्रेड करना है, कैसे मैं डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ सकता हूँ. तो ये मैं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ. और मेरा जो ख़्याल है मैं कैसे अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, यानी अपनी सर्विस. इनफैक्ट सर्विस मेरी है प्रोक्योरमेंट. कोई भी आदमी अगर कोई जैसे आप अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और आपको नहीं मालूम कि मुझे रेस्टोरेंट में कितनी चेयर्स, कितनी टेबल्स, कितने स्पून एंड फोक या वॉट एवर इट इज़, जो भी आपने लेना है, कितनी क्वांटिटी आपने लेनी है, कहाँ से लेनी है, कौन सी क्वालिटी लेनी है, तो वो मैं प्रोवाइड करता हूँ. मैं आपकी हेल्प करूँगा. जो सर्विसेज आपको चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, वो मैं आपको अवेलेबल करूँगा फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. लेट इट बी फ्रॉम चाइना, फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम इटली और फ्रॉम पाकिस्तान. सो दिस इज़ इट. थोड़ी सी आई थिंक आपकी पिच इंप्रूव हो सकती है क्योंकि यू टोल्ड अस अबाउट योर बैकग्राउंड, यू स्पेंड टाइम इन दुबई. तो यू कुड ऐड के आई हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड आई कैन ब्रिंग समथिंग टू द प्लेट दैट a typical procurement manager from this region couldn't. That's why I mentioned that. लेकिन वो आपने ये बताया कि मैं बाहर का काम कर चुका हूँ. वो होना अच्छा मैं I can get your stuff from China, क्लेम तो सब कर सकते हैं ना. France. क्लेम सब कर सकते हैं. आप क्लेम नहीं, आप प्रूव कर रहे हो उस तरह. Sure. तो जैसे I have been purchasing from China. हाँ, yes. And Egypt, and France, and also from Canada. Some food stuff I brought to Dubai, not in Pakistan. नहीं, of course. Sorry? I didn't get it. वो आपको वो मंजन बेचना चाह रहे हैं अपना भी. अच्छा. आपको डायरेक्टली. बहुत शुक्रिया. कौन रह गया? जनाब आ जाए. 1 मिनट के लिए आ जाए. कुछ नहीं होता, अगले में कुछ नहीं होता. अभी भी होगा, जो अभी होगा बाद में होगा. फिर खज़र अगले. कौन है? अच्छा इसको इस यहाँ से पकड़ लीजिएगा. थैंक यू. आ जाए. यस बॉस. कि इनके अगर कनेक्शन होंगे हमारा है चीज़, तो अब इन्होंने ये उस तरीके से जिस आप चल या अगर कोई बेसिक बताएंगे प्रोडक्शन किया तो ये चीज़ सही है. तो हाँ. इस बुकिंग के फिक्सेस में और जो आप मीटिंग कुछ अलग तरीके से हो. सो द पॉइंट इज़न्ट के पिच मीटिंग इस तरह मतलब जो भी है, बट दिस इज़ समथिंग फॉर एवरीवन के हम बहुत कुछ जानते हैं और हम बहुत कुछ बेच सकते हैं और बेचना चाह रहे हैं, लेकिन उसको जल्दी किस तरह बेचें, क्योंकि जब जल्दी का एक मकसद है. सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बाहर निकालो, आपकी अपनी क्लैरिटी होगी, कुछ तो शुरू होगा. मैं कहूँ 10 मिनट की पिच दो तो फिर बंदा प्रेजेंटेशन बना कर लाएगा. 30 सेकंड पिच में क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है बोलने को, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं होता. तो आप एक सेंटर ग्राउंड लें. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बिल्कुल. ठीक है, मगर इनकी मुझे एक बार मुझे कर गई प्रोक्योरमेंट
और हमारा जो काम है वो हम जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके अंदर प्रोक्योरमेंट मेन की ऐसा ही है। इन्वेस्ट करें वहाँ पे विजिट करें तो हमें तो उसके लिए ही तो इंट्रोडक्शन तो हम इवेंट में सबके वैसे ही करते हैं। तो जो सुबह हुआ था जिसमें आप नहीं आए थे उसमें सबका इंट्रोडक्शन हुए थे। सो मेरी सेकंड मीटिंग पक्की हो गई। बस सेकंड मीटिंग एक के साथ तो पक्की हो गई, तो उसके लिए तालियां बजाएंगे। एंड जनाब, सो आपका नाम क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई आप क्या कर रहे हैं वैसे? डिजिटल मार्केटिंग अच्छा, आ जाए। एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। 30 सेकेंड चले शुरू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल्ला। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ कुछ कंपनीज़ के लिए। और मंजन बेचना है, इंट्रोड्यूस नहीं, चल इंट्रोड्यूस कर लें। लेकिन बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ आप लोगों के कंपनीज़ के लिए या आप लोगों के जो ब्रांड्स हैं उनके लिए मैं वीडियोग्राफी कर सकता हूँ और आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट और जो आपके सोशल मीडियाज़ हैं ये सब मैं हैंडल कर सकता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा। क्या नाम था? सॉरी, मेरा नाम क्या था? अब्दुल्ला। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ इस नीश स्पेसिफिक कंपनीज़ के लिए। और आपकी कंपनी में मैंने डायग्नोस किया स्टडी करने के बाद कि इस जगह पे आप बहुत लैग कर रहे थे। आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग बिल्कुल ना होने के बराबर है, आपका कंटेंट जाता नहीं है। और कंटेंट की मैंने ये स्टडी, आप बता दें कि जी मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का ये डायग्नोसिस है कि अगर आप कंटेंट फ्रिक्वेंटली डालते रहें, पोस्ट करते रहें अपनी स्टडीज़ या अपने बारे में, तो आपकी इतनी % सेल ऊपर चली जाती है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी 50% सेल ऊपर लेके जाना, तो आई एम द गाय फॉर यू। इस तरह करें कि दूसरा बंदा, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे सिर्फ अपने 15 मिनट दें जब भी नेक्स्ट वीक आप अवेलेबल हो, एंड देन आई कैन टेल यू मोर अबाउट माई प्लेटफॉर्म। Or I can get to know more about your brand and how I can best help. मगर पहले तो रिसर्च कर आया ना, अभी तो पिच में बोल दिया उसने। जनरल नहीं बोल रहा मैं, एलिवेटर पिच में आप देखें जब घुसते ही आप किसी को पिच करने लगे, मतलब आपको पता है ना दूसरा बंदा कौन है। तो आप ईमेल जब भी करते हैं किसी को तो आपको पता होता है दूसरा बंदा कौन है। पर्सनलाइज ही करनी चाहिए। नहीं, कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग इज़न्ट रियली वेरी इफेक्टिव एंड दैट्स नॉट आवर वे टू गो। अगले हफ्ते करेंगे वापसी, अभी करेंगे? अगले हफ्ते भाई। कौन रह गया? आप रह गए, आ जाए। मुदस्सिर, फिर आओ। कुछ भी पिच करो जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफदरुल हक है। मैं कराची यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में MSc कर चुका हूँ और अब मैं एक सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरा बेसिकली काम यह है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह जैसे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर अपना काम अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं बेहतर तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। और उससे क्या फ़ायदा होगा? लोग ज़्यादा आएंगे आपके पास, आपकी पोस्ट्स अच्छी होंगी। मेरे पास ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा? आपकी प्रोडक्ट बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या मतलब? मतलब ज़्यादा लोग आएंगे, जो कुछ आप सेल करना चाह रहे हैं, अगर आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। कस्टमर ज़्यादा आएंगे, ये कि नहीं बोला कि कस्टमर लाने हैं तो फिर मैं आपका बंदा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक बोल दें। और आपकी नीश कोई है अभी तक कोई डिसाइडेड है कि भाई मैं इसी तरह की कंपनीज के साथ काम करता हूँ सिर्फ? नहीं, अभी तक नहीं। आप नए हैं अभी? जी। अच्छा, ओके। मगर फिर ये होगा कि हम कहेंगे ओके आपका वैसे बैकग्राउंड क्या है? फैमिली का कोई काम हो या कुछ हो? यूजुअली क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। आप भी टीचर हैं? नहीं, तो आप एजुकेशन इंडस्ट्री को तो अच्छा खासा जानते हैं। तो अगर आप अपनी सर्विसेज सिर्फ स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को देना शुरू कर दें तो क्या नहीं बेच सकता। तो आप एक नीश में अगर इस इंडस्ट्री को पिक कर लेंगे तो फिर आप उसमें किंग बन जाए। सब में क्या करें? आज ठीक कौन है क्या? अच्छा, टाइम स्टार्ट करते हैं। मैं यूथ पार्लियामेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ एसोसिएटेड हूँ, तो उससे रिलेटेड जो है मैं करता हूँ। Assalamu alaikum, my name is Mudassir Zafar Iqbal and I'm the former senior vice president of Youth Parliament in Cabinet. So this is the organization which represents the 60% of the youth population of this country, and we are doing
working to solve the problems of Karachi, specifically for the youth. We are working on perspective building. If you want to connect me, you can always connect me on LinkedIn with my name, Mudassir Zafar Iqbal. Let's connect and let's do something great for the country and this nation and the youth of Pakistan. Awesome. I love it. तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी और अपने स्टूडेंट काउंसिल का जो पोर्टफोलियो है, बाय द वे आई वाज आल्सो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इन माय यूनिवर्सिटी व्हिच इज पीएफटी, तो अगर उसका पोर्टफोलियो देना, नो नीड फॉर माय It's recording now. Don't record. Off the record. Okay, let's do it. Okay. So, so that's what you do. मैंने अपने 3 से 4 पिचेस किए हुए थे. यूनिवर्सिटी में कोई एकेडमिशियन आता था तो आई जस्ट प्रॉम्प्टली सेड कि आई एम मुदस्सिर ज़फ़र इकबाल एंड आई एम फ्रॉम पीएफ कीट एंड आई एम आल्सो द स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट ओवर देयर. वहाँ मुझे यूथ पार्लियामेंट की और दूसरी तीसरी चीज़ों की डेफिनेशंस देने की, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ टू बी रेलेवेंट. कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर आप कितने रेलेवेंट हैं. अगर आप फोटोग्राफ़र हैं तो क्या आज आप रील वाले कैमरे से पिक्चर खींच रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट, राइट. आप एक डिजिटल कैमरा आपके पास, उससे भी आप अपग्रेड हो गए, अब ये प्रोफेशनल कैमराज आ गए, राइट. तो उससे फोटोग्राफी हो रही है प्रॉपरली. सो दूसरी बार चल रहा है? नहीं, मैं पिच के बाद आपका शो कंटिन्यू कर रहा था जो आप छोड़ के चले गए था. तो आप किस तरह से रेलेवेंट रहेंगे इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, किसको पिच कर रहे हैं ये देखें, एंड देन अपनी मल्टीपल पिचेस अकॉर्डिंग टू द पर्सन एक टेम्पलेट उसका बना के रखें और उसको अकॉर्डिंग टू द पर्सन मोल्ड करें. दैट्स ऑल आई हैव टू से. साज टेक योर शो बैक. मैं स्पीकर दे रहा हूँ. अच्छा चला पिच करना है. चलिए एलिवेटर में 30 सेकंड. 30 सेकंड क्या बेच भाई. माइक लगाने. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहल्ला वाला है. मेरा एक ब्रांड है, उसका नाम है वर्क, जहाँ पर हम अकूस्टिक साउंड बॉक्सेस बनाते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, को वर्किंग स्पेसेस के लिए, विच आर रिक्वायर्ड स्पेसेस जो 45 1 आवर 1.5 घंटे की मीटिंग्स और काम कर सकते हैं. या दैट्स इट. जज़ाकल्लाह खैर. बंधन बेचना है. 30 सेकंड्स एलिवेटर पिच. 30 सेकंड. अबे एलिवेटर न्यू एलिवेटर. ओके, सो वो बेसिक केबिन्स होते हैं जहाँ पर आप जाके साउंड प्रूफ होते हैं. अगर उसको मंजन तो बेचो, उसको प्रॉब्लम बताया नहीं कि आपको ये प्रॉब्लम होता है, मैं उसके लिए आप शुरू करें. ओके, तो एट वर्क व्हाट वी डू इज़, जहाँ पर को वर्किंग स्पेसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, टेलीकम्युनिकेशन स्पेसेस जहाँ पर शोर हो रहा होता है, मीटिंग्स हो रही होती हैं और आपको प्राइवेट काम करने का मौका नहीं मिलता, तो हमने वहाँ के लिए छोटे कमरे बनाए हैं जो हम जाके फिट करते हैं और वहाँ पर आप आराम से सुकून में ना प्राइवेटली काम कर सकते हैं. केबिन साइज रूम्स फॉर विच आर साउंड प्रूफ, और वहाँ पर आप ना आराम से काम कर सकते हैं. ओके, आप मंजन खरीदेंगे इसका? I would at least check amount. आपने CTA नहीं दिया लेकिन. नहीं दिया? CTA call to action के अगर हमारा काम देखना हो तो कहाँ देख सकते हैं? कॉल टू एक्शन नहीं दिया. हाँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे कॉल. तो सर्विस बिजनेस का ये प्रॉब्लम. हम सर्विस बेस्ड नहीं है. याद नहीं रहा. सो सॉरी. अस्सलाम वालेकुम. I'm Roman Azim Khan. I'm a graphic designer. Sir, I think you are a businessman and I'm very good in making the post, Facebook post. I can manage your Facebook and inshallah, if I'm going to manage your post in 15 days, you can see the result. Your business will be grow. Definitely 50% or 45%, or I can give you services free in the beginning. After that you will realize that my service is good, then you are going to pay me. First of all, just give me 15 minutes. We have to meet again inshallah tomorrow or day after tomorrow. Just decide, and this is my number, this is my card, and inshallah we have to meet again. Thank you. मेरे ख्याल से इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. आई थिंक इंग्लिश में था, उर्दू में क्यों नहीं कर रही? हाँ ना, उर्दू में करें. Language does not matter. नहीं, Confidence matters. उर्दू में आप थोड़ी, मुझे लगता है
फ्री और कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुमाना अज़ीम है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने रिसेंटली जो है वो रेहान अल्लाहवाला का इनक्यूबेटर जो है ज्वाइन किया है। और सर मुझे लगता है कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको देख के लगता है तो यह है कि मैं इजीली आपका पेज मैनेज कर सकती हूँ, आपको जो है फेसबुक पोस्ट बना के दे सकती हूँ। 15 डेज़ मेरी सर्विसेज चेक करें, इंशाल्लाह मैं आपको फ्री सर्विसेज दूँगी। 15 डेज़ में अगर आपको कोई चेंजेस नज़र आते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता है 45% या 50%, देन यू कैन डिसाइड कि हाउ मच यू आर गोइंग टू पे मी, कितना आप मुझे दे सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद ही इसका होगा। ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नंबर है सर। वी आर गोइंग टू मीट इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू सो मच। आई थिंक कंटेंट बेहतरीन था और इसमें बस थोड़ी सी टर्म्स ऐड कर देंगे, थोड़ा सा वो और क्लैरिटी जल्दी आ जाएगी। बट मेरे ख्याल से बेहतरीन सर वो रहेंगे, आप भी रहेंगे आ जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद यामीन है और अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यामीन है और मैं सोशल मीडिया इनक्यूबेटर में स्टूडेंट हूँ। और हमारी जो नीश है वो फर्नीचर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। अगर आप अपनी फर्नीचर बिज़नेस को ग्रो करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एजेंसी का नाम है थिंक डिजिटल एजेंसी। अगर आप हमारे पेज में विजिट करना चाहते हैं तो हमारा पेज पे आप सर्च करते हैं www.thinkdigitalagency.com। अगर आप अपनी बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हैं www.thinkdigitalagency.com। तो अपनी बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हो तो आप हमारे से लाजमी कांटेक्ट करें। थैंक यू। डरे हुए क्यों हैं? हेजिटेशन है तो बिल्कुल होती है, सही है। कोशिश करें और थोड़ा सा लाउड हो, थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो गए और पकड़ लें उसको ना, उसी वक्त उसको ऑप्शन ना दें कि जी आप किसी और से ख़रीद सकते हो, उसका ना उसको पकड़ लें। अभी आपने ऑप्शन दे रहे थे कि आप जाके चेक करिएगा, नहीं भाई मैं हूँ, मैं करके दूँगा। थैंक यू। दास्तान किस किस को आता है भाई? तुम्हें आता है? ओ एक मिनट कैसे बैठे बैठे सारे गम मुझसे लेकर गए तुम, जैसे जैसे फूलों सी खुशबू देकर गए तुम। मेरी तन्हाइयाँ, मेरी परछाइयाँ कहने लगी तू न जाए तो नूर छोड़े जा। कैसे बैठे बैठे यादों में हंसते बसते गए तुम, जैसे प्यारे सपनों में आके गुम हो गए तुम। मेरी तन्हाइयाँ, मेरी परछाइयाँ कहने लगी तू न जाए तो नूर छोड़ जा। हो या रात हो तुम पास हो, तुम पास हो
कहनी है आज और बनके दुआ तू है बसी होठों के आस पास ही। क्या कह रहे हो? क्या कह रहा हो? अच्छा यार, साथ अगर आप लोग गाओगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना? आफरी आफरी तो आता है ना सबको? हाँ, तो साथ साथ थोड़ा सा। हो ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी, संदरी संदरी मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। ओ आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। हो आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों ही दो आतशा, आँखें मैं कदे के ये दो बाग हैं, आँखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं, आँखें नीची हुई तो हया बन गई, आँखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, आँखें उठ कर झुकी तो अदा बन गई, आँखें झुक कर उठी तो कज़ा बन गई, आँखें जिनमें है कैद आसमां और ज़मीं, नरगिसी नरगिसी मखमली मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। हो आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, सुलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हो नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत निकली, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहीं अहले दिल को
तमाशा बनाया, कहीं और जाके अदाएं उछालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर को तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। Come on. क्या हो जाए? आहटे हो जाए, आहटे कौन सा? सम्यक प्रार्थना का। Oh God. ये बजाएगा नहीं है वरना। क्या हो गया बेटे? लेकिन मैं कहीं और से शुरू करता हूँ। हाँ वो पता नहीं तुम कहाँ से करते हो? मैं उसमें और भी चीज़ें मिला देता हूँ। वो नहीं है ना, तो कहाँ से लाते हो? वो दूसरी है ना पोइट्री, इस पे बैठ जाती है। हाँ? इस पे बैठ जाती है, वो है दूसरी। पोइट्री निकाल के ले आते हो ना, मुझे पता है दिखाने जाते हो। Thank you. Thank you. क्या? I sign more. क्या गाएं? कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले, बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले तुम नहीं मिले, अब की तजदीजे वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमान जाना, अब की तजदीजे वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमान जाना, यूं ही मौसम की अदा देखते याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, ये भी अंदाज़े मोहब्बत है तुम्हें क्या मालूम, हम तुम्हें जीत के हारे हैं तुम्हें क्या मालूम, एक तुम हो के समझते नहीं अपना हमको, एक हम हैं के तुम्हारे हैं तुम्हें क्या मालूम, अकल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं,
आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। आप कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आज़माए हैं। मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, एक मैं अकेला था, काफिला भी उसका था। मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, एक मैं अकेला था, काफिला भी उसका था। साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, तेरे रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। आज क्यों अकेला हूँ दिल सवाल करता है, लोग तो उसके थे क्या खुदा भी उसका था। वो झलक पड़ते हैं ज़ालिम के आंसू, तुम पे कुर्बान हैं मरने वाले। झलक पड़ते हैं ज़ालिम के आंसू, तुम पे कुर्बान हैं मरने वाले। वो जा रहा है वफा का जनाजा, बेवफा से कहो मुँह छुपा ले। वो झलक पड़ते हैं ज़ालिम के आंसू। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा ज़माना हुआ। सदाएं सुनो जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो ज़ुबानी सुनो, तेरे माथे पे बिंदिया, तेरी आँखों में काजल। तेरे माथे पे बिंदिया, तेरी आँखों में काजल। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं। तेरी ले बलाएं, तेरे सदके उतार। तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। सदाएं सुनो जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। छोड़ दिया गले ने साथ छोड़ दिया। आजा 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 सब आ जाओ, जिसको गाना है सब आ जाओ। दूरियां क्या बात है। कहीं जाए ना
चाहे खामोशी आए रहना सकूं आवाज देके मुझे तू दे जा कटता नहीं है ये तन्हा सफर क्या बात है कट जाएगा तो बैठ जाएगा मेरा गला ना गाने में। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते पे तुम थे भी उर्दू टर्की इंग्लिश चलो भाई डुएट तो फिर टर्किश में नहीं हो सकता। डुएट तो वैसे भी नहीं हो सकता, तुम्हारी आवाज़ कहाँ जा रही होती है? वैसे भी नहीं हो सकता। कोशिश करें। अच्छा वही वो बेबी सॉन्ग रात को भी जो किया करना है तो फिर रात को लिए मैं तुमको मेरे साथ डुएट नहीं वो वाला वो कौन सा था जिसके साथ वो लम्हे किया था वो सही है। वो लम्हे से पहले यामूर जो था यामूर था।
आता है? मुझे नहीं आता, सॉरी। बजाना आता है कम से कम? थोड़ा सा गाओ। फवाद खान वाला वो लो पिच है, आवाज़ पीछे तक जाती नहीं है। हम लोग सब मिलके गा रहे हैं। होना था प्यार गाना है? कोई भी नहीं होना था गाता। प्यार या हम सफर? ऑलराइट, कोई भी नहीं बजाओ। गाता, सब बोलते हैं हम गा लेंगे। बजाओ। होना था प्यार बजाओ। हैं? क्या क्या बोले? तुम उस दिन थे मेरे साथ क्लास में जब मैं स्कूल आई थी? ओह, नहीं, मैं जब आई थी बाहर रेहान फाउंडेशन, नहीं थे तुम? मिली नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं मिली है उसके साथ। क्या है व्हाट इज ये सिग्नेचर बन गया मेरा, व्हाट इज। अच्छा है लेकिन। ये लो। सब बोर हो रहे हैं। ऑफ कोर्स। चलो बंद करो। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो ख्वाब, होना था प्यार, हुआ मेरे यहाँ। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यहाँ। होना था प्यार। याद ही नहीं होगा। थामे दिलों की बाहें हम आते सालों में, सालों में। पाए जवाब हमने तेरे सवालों में, सवालों में। ख्वाबों की डोर टूटे ना यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यहाँ। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ। He's just sitting there still. I had to nudge him कि सोए रहे हो। तो मुझे याद ही नहीं है मैं क्या गाऊंगा गाना। शुरू की लाइन ही साथ साथ गुनगुना देता है इंसान। शुरू में गुनगुनाया था मैंने। So thank you. Listen, I'm about to leave. Yeah. All I can contribute is a ghazal because I'm a sad singer. Please do. So recommend me any ghazal. वो दस्तूर आती है आपको? दस्तूर क्या अभी यहाँ पे अभी चल रहा है? इसलिए हाई नोट्स हैं, जब पॉसिबल नहीं है। अबे यार हो जाएगा, क्या हो गया? दीप जिसका मोहल्ला ही में जले चंद लोगों। हम देखेंगे। वो याद नहीं मुझे। मुझे याद आखिरी दो गाने वो याद नहीं है। बहुत मुश्किल है। रंजिशी किसको बताएंगे जुदाई
सबब हम किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए दिल दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। नेक्स्ट क्या होता है? नहीं इसका नेक्स्ट शेर वो पढ़ लिया ना। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। वो उसी से स्टार्ट वो आता है आपको कौन सा गाना है? क्या नाम था उसका? मोरा सही। आई कैन ट्राई। मोरा सही मुझसे बोले सावन भी तो स्केल बता रहा हूँ मैं, इस स्केल में नॉट फेमिलियर विद गिटार। फिर भी कभी तो गले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही। वैसे ही एक मिनट ये स्केल। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए। ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए। मोरा सैया मुझसे बोले ना, मेरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई। मोरा सैया मुझसे बोले ना। We tried at least. No, he did not sing again. तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम्हें समझ नहीं पाओगे, तुम्हें समझ नहीं पाओगे। मोरा सैया मुझसे बोले ना, जब हम ना होंगे तो पहरवाए, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे। मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। चेक इसमें क्या यार वो हबीब जलीब की नहीं आती आपको? यार मैं ब्लंडर ही कर दूँगा। वो
दस्तूर जिसका मोहल्ला चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, दीप जिसका मोहल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले, वो जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फिसून, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फिसून, चारा गर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, चारा गर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारा गर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, इस खुले झूठ को ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं